is not just a word, it is a force. The force that leads us to climb insurmountable heights, sail immeasurable distances, and believe in the unbelievable. Like a delicate blossom emerging from the frost of winter, hope blossoms in the hearts of those who dare to envision a future beyond the veil of uncertainty. It emerges as a gentle whisper amid chaos, gently urging us to cast aside the shackles of doubt and embrace the promise of what lies ahead. In its tender embrace, hope gifts us the courage to face adversity and triumph over adversity with an unyielding spirit. Good evening, dear friends. I'm Rishika, And I'm Adi. and we welcome you to the first session of Hope, a special online event brought to you by the We Rise Together Foundation, where we aim to reflect the loud impact of change makers all around the world. As We Rise Together is an organization dedicated to the betterment of both the environment and people. Through our three impactful initiatives, Sunday for Secured Future, Helping Hands, and She Hygiene, we strive to create an impact in the field of environment, menstrual hygiene, and poverty. Since we have gathered to discuss the theme striving for a better environment, we cannot move on without highlighting the huge impact of our initiative, Sunday for Secured Future, where we take at least one climate action every Sunday. Together, we have planted over 3,500 plus trees, organized freedom drives, and engaged youth to work for the betterment of the environment. In the current times, it is crucial to recognize the current condition of our environment. Climate change, deforestation, pollution, and loss of biodiversity are alarming issues that require our immediate attention. The time is to act now. We must strive for a better environment, not just for ourselves, but for the generations to come. Our actions, no matter how small, can create a significant positive impact. Through collective efforts, we can create a brighter and more sustainable future. Now, let's proceed with the first session of Hope, focusing on striving for a better environment. We have three esteemed speakers who have been working diligently in the field of environment. They will share their knowledge and experiences to inspire us all. After, uh, after the talk of each speaker, we open the Q&A round for 1 minute and take a few questions for the speaker. But before all the talks, we will hear our guest speaker talking about how youth can strive for a better environment. At last, we will proceed towards the panel discussion, followed by the final question answer round for 5 minutes. Now, to commence with the first session of Hope, we would like to invite our special guest speaker who has innumerable accolades to his name. But most of all, he's an inspiration, a mentor, and a friend to youth who sets an example for striving for a better environment. He is none other than the director of the Alcon Group of Schools, Mr. Ashok Pandey. Yeah, thank you. Rishika, you want me to come in now? Yes, sir. Over to you. Prerna has appeared on the screen. Does she want to say anything? No, I thank you so much. I'm sorry for the delay and the technical glitch. No, not at all. It's perfectly fine. So thank you very much, Rishika, for a brilliant opening. Thank you, Arav, for inviting me and all your colleagues, Adi, and some of my colleagues and friends, both from India and abroad. And I'm absolutely delighted. Delighted for two things that I have been invited here to say something, number one. And number two, I'm delighted by my own young friends and students. And that gives me an opportunity to say a few words. I'm absolutely impressed with your organization, We Rise Together Foundation. I'm aware of the kind of work that you and your team is doing, and particularly in the area of menstrual health, hygiene, tree plantation, fighting climate change, so on and so forth. So nothing can give me a better
feeling and more happiness than to know the great work that you are doing. Uh, Now, couple of things I want to share in next 7 to 8 minutes, which is I find will be relevant and will be a little inspiring to listen to, particularly by the young people. So, at this stage, I have a very vivid memory of my own childhood when I was a student like you up to high school. I lived in a village with my grandfather, and my grandfather owned, apart from a huge piece of land, he also owned what we call 50 to 60 mango trees and also trees of other varieties. The village where I lived for many years was surrounded by many water bodies. I was privileged to live in the middle of uh, birds, insects, including snakes, domesticated animals, and also some of the wild animals. And now, 40 years down the line, and I'm very ashamed to tell you that I own none of those trees. They're all felled. I only have a piece of land. All water bodies are dried up. The birds have gone almost extinct. The domesticated animals are not in good shape, and the wild animals have all disappeared. Now, this is the situation of the environment in which I lived, and this is the environment that I'm forced to live now or experience. So you just imagine what has happened during these years. It is obviously a very, very classic, a very daring, and a very daring example of how the generations up to me have done this kind of damage to the environment. And therefore, this particular webinar is assuming a very, very significant importance as to how youth should engage and how youth can do a lot of transformation in fighting the climate changes and in preserving the environment and doing a lot of good things so that you have a better story to tell 10 years, 20 years down the line. Your story should be more inspiring, more motivating, and certainly more of an exemplar for the future generations. Now, to do these things, you need certain attributes and characteristics. And in today's world of a very, very dynamic and vibrant media, a lot of collaborations across the continents, three things, in my opinion, that you require are all beginning with A. One is that you have to be very articulate, communicative, which you are. It is my faith. Number two, you have to have the power, will, the desire, and determination to be an advocate, another A. And the third one is that with your power of articulation and advocacy, you have to take positive, affirmative action. So these three A's, if you deploy in various situations, I'm sure you will achieve what I call three I's. First I is influence, which means you can move people emotionally to take action. The second I is inspire. You can inspire people to change their behavior and take action. And the third I is impact. You can create impact on a whole lot of generation so that their behavioral change becomes a habit and pushes them to take those actions which are transformative with regard to environment and climate. So in my opinion, the three A's, articulation, advocacy, and action, plus three I's, influencing, inspiring, and impacting, is actually the EQ. And here EQ is not emotional quotient. Here EQ is environmental quotient. And that will increase the environmental quotient for everybody. And I'm so happy that the youth of today, and particularly the youth that I'm interacting with
They have all the three A's, and they have capability to inject. Again, a word automatically comes to my mind, inject, I. Those three I's, influence, inspiration, and impact. And you can be the real heroes and agents. And you have those qualities. And therefore, what you have to do is simply exhibit three things. You have to have a kind of sacrificial instinct. You have to engage in, you have to devote, you have to sacrifice your time, your energy, your talent, and your ability to network. Second, you have to set examples. You have to mentor your friends and your juniors. And you have to come out with a very, very small, easy to follow toolkit. And you have to take very small actions. Remember, to make a big difference in the world, you don't have to do big things. You have to do very small things. And you have to do it not because you want to earn trophies or medals or accolades. You have to do it because it is a service to the community. You have to make positive changes. You have to bring in transformation. And the third thing you have to do is that along with your studies, which you're doing, and all of you are in this nascent stage of your career making, you have to study hard. I know, I'm aware of it. You have to prepare for your college. You have to prepare for your career. You have to prepare for your life. But I can tell you, by doing all these things parallelly, you are enhancing your credit bank of portfolio making, credit bank of personality building, and credit bank of leadership development. And that will help you learn those skills and those values along with your knowledge that will propel you to the highest level of man making or woman making. That is something very, very important. And therefore, never be bogged down by the fact that you have not been able to do this or that because you are engaged in these activities. All these activities, if I have to put under one heading, they are all components of character building. So you are building your own character of your peers, and that is resulting into so much of positivity for you and the community. And that will help you flourish as human beings. And I'll tell you why. Because most of your peer group, they are also doing some kind of flourishing. But unfortunately, they are doing that flourishing only in half of their area. And that is called academic flourishing, cognitive development. You are combining the twin power of cognitive development with character development, which will result into complete flourishing of your human being that you are. And if every individual such as you begins this exercise in this particular fashion, you are going to make a huge difference to the society and the community. And therefore, I think I'm full confidence that if students such as yours can create this kind of example and create a cohort of such lofty ideals and such capable activities which can move the mountain, will create a very good example for the rest of the world. I wish you luck. I wish you success in all your endeavors. And even though I'm an adult and older to you, I have a lot to learn from your initiatives. If I had a student leadership available to me during my student days, I'm sure I would have turned out to be a better person, and I would have done much more transformative work in my life than I have been able to do otherwise. So please accept my good wishes, accept my blessings, and accept my good luck to you and your team. And thank you once again for inviting me. Thanks a lot, sir. And
I'm sure it was inspiring, impactful, enlightening for me, and even for more. Now, starting with the lineup of our three change makers, the first one of them I would like to invite is a well recognized climate activist and advocate from Uganda. He is the CEO of Earth Volunteers, a non-profit organization that was formed in 2020 to unite young people who are passionate about taking climate actions voluntarily. Not only this, his work has been featured almost everywhere across the globe, from CNN, BBC, CBC, Time Magazine, and many others. He is a change maker. He is a flag bearer for environmental protection. He is none other than Nyombi Morris. Uh, Mr. Nyombi, you could come on the yeah. stage. Yeah. Well, Nyombi. Because there are some Yeah. issues. Yeah. Mr. Nyombi, can you unmute and turn on your camera? Apologies. My internet was just causing chaos here, but I'm fixing it just a No second. problem. No problem. No problem. Okay. So can you hear me now? Oh, yeah, you're Yes. audible. Yeah. We cannot see you, by the way. So, are you able to turn on your camera? Yeah, I'm going to turn on just a second. No problem. Okay, there we go. Is it okay? Yeah. Yeah, thank you so much. Apologies for the internet. As you know, I'm in Africa, so I'm back home, and yeah, everything is always crazy. Greetings, everyone. Thank you so much for inviting me to this wonderful event. Thank you, Thes. I always see your work. I support every kind of things you do because I've seen your struggle, and I'm so happy to see that your organization is actually growing so fast. I remember the last time I had you on call, I was asking, how do you manage to get funding? Because on my side, it's never easy, but we have to continue. To those who don't know me, my name is Nyombi Morris, and I'm a youth Ugandan climate activist. I was born and raised here in Uganda, despite the abundant natural resources and biodiversity, but the exploitation is not allowing us actually to thrive. I am a victim to climate change. At just the age of 10, I was displaced, I and my family, and we were forced to come to Kampala, the capital city of Uganda, where we are today. Our home was washed away due to floods in eastern parts of Uganda. And a decade later, I never knew that I would actually be a climate activist. But when I was using internet, I landed on a youth climate movement that was led by powerful young activists. For example, you all know Greta Thunberg and Vanessa. So witnessing these people going to street, demanding climate justice, I was impressed. But again, I had to ask myself, why are they doing this? Because to be honest, climate change education or climate curriculum is not yet in schools in Africa. I don't know how some parts are, but in Africa, it's not there. So what we learn is what is climate change,
how will it affect us? That's all. But we don't know that even it includes community, policymakers, and even our future. So when I joined, I started demanding for justice through striking, writing placards, and maybe trying myself to do some research about climate change. I didn't know that I would get to know more, because when I shared my story with some people, including one of our fellow activists in Uganda, Vanessa, I told her about how I was displaced, how my family had to leave, how actually we lost our dad during that transition going to Kampala. My dad was not that well off. So helping us to survive, getting the basic needs, he required a job. From being a farmer, he had to look for a good job. And that's when he realized that he had failed because he had no qualification. At times he could go and come back, but someday he never came back. And since 2010, I've been raised by a single mom of 3. So when I joined activism and I shared my story, I was impacted by how these people reacted, because everyone was like, actually, you can use that story to help others understand how climate change affects and what they can do. So this pushed me to do more research. And in 2020, there was an attack on one of the forests in Uganda. It's called Bugoma Forest. This forest has hosts over 10,000 species, including animals and birds. So when I saw it, I was like, this is not fair, because the government wanted to give it to a sugarcane company, because they had realized that by 2025, the demand on sugar will be high. So they said, why don't we give out this forest? They grow sugarcane and we'll be able to get cheaper sugar in 2025. So this shocked me, because at that time, Uganda a lot. So I said, no, if we are making profits like this in 2020, what if we leave this forest here? Don't we think we can make even more? So for me, that was the first impression that I had in my mind, and I was like, I need to do something. So I started standing on street, demanding for the revoke, because they had already given them a certificate that approves them to go and put down the trees. So I was like, I need to stand up. So I started demanding the government to revoke the certificate that they had given to this company. And a lot of attention was called, to an extent that I was invited for a TV show where I was talking about the forest. You know, I was just green. I was still new in this, but I was brave enough to go during lockdown to go to that TV show. So I talked about the forest, what was the purpose of the trees, why we need it, why these actually forests generate more income. When you look at the tourists we get who come and tour, do some stuff, camping and so on, they liked it, but the government wasn't happy because I was interrupting their business. For them, they say it is their business. So what they did was to suspend my Twitter account. They suspended it for over 1.5 months, but I was lucky because I had already got the numbers. So one of the journalists from Verge Media came and interviewed me, and they contacted Twitter direct. I was lucky because when they contacted Twitter, Twitter claimed that for us, we cannot silence people, we cannot silence activists because we understand their work. And after 1.5 months, they gave me back my account. So I proceeded because I said, I think this is the time to show people the purpose of trees, because some other parts, people, yes, knew trees, but they were looking at them as a source of retirement benefits, where they grow these trees during the time of they are maybe when they are young, around leaving the youth stage, they go buy a land, plant trees, and they expect to make more money during the time of retirement. So they are using that as an investment area, but they didn't know that some trees are actually very important when it comes to reducing emissions in atmosphere. So I said, okay, I'll try my best to educate these people about the importance of trees
and why they shouldn't just focus on how they are going to make furniture out of it, how they are going to make money out of it, but how we are going to increase and save our biodiversity, because even the food prices are also depending on how much rain we receive per year. You know, seasons have been changing. So what I did was to form an organization. This is called Earth Volunteer, with a mission to bring together young people who are passionate about climate change, but also ready to take actions voluntarily. So these people, actually, these young people, we are coming from universities, those who are taking environmental courses, sustainability lectures. They came and joined me, and from 2020 October to 2021 March, we had already planted 13,000 trees. And where are we planting these trees? We were visiting existing forests. Uganda has more than 131 131 forest reserves. Some of them are not big, but they are all forest reserves, according to the National Forestry Authority. So we visited more than 13. And each forest we are going with at least 1,000 to 2,000 trees. And these young people were super excited. We did a lot of planting, and in 2022 March, I was celebrating 20,000 trees planted by me. So I got an award, I got an achievement where CNN recognized me as Environmentalist of Tomorrow. That was huge, but I was so happy because these young people were very, very happy to see that we are able to change the world. We are able to show the world that everything starts with small steps. So we started like 5, and in the end, by 2022, we are organizing with over 320 something students. And it was massive. So I realized that the change is possible. And that's when I was also growing. My experience was growing. So apart from that campaign for tree planting to make sure we protect our forests, that campaign, we named it Ecosystem Restoration. And we jumped on another campaign. And now this campaign was very dangerous and terrible. This campaign was known as, actually still in existence, called the East Africa Crude Oil Pipeline Campaign. It's called Stop ECOP. Now, the reason why we jumped on this is because this campaign just caught our attention where people were crying. Like the oil drilling that is going to happen, coming, like the pipeline that is happening, coming from the western Uganda to Tanzania, is actually already in existence, whereby they never consulted the people in the area where they are going to pass all this pipeline, where the pipeline is going to happen. So people started crying, asking government to wait so that they can get where to stay. And the government was like, the time has run, we have been warning you. So we had to stand up and say, guys, okay, you want these people to be evacuated to go somewhere. Where are they going? Are they compensated? Were they consulted? This campaign was massive because it attracted even the international media, and a lot of people joined the campaign. When they joined, the pressure turned to us, me, myself. I started receiving threats about the campaign because they were asking, what are you talking about? You are trying to stop the progress. You are trying to enter into government's business. So they came to our home and they threatened my mom because I don't stay with my mom. So it was safer for me to leave. And this was terrifying because some activists were arrested in that situation and others are nowhere to be seen because they disappeared. So it was terrible, but there was a lot of media attention. And that's when I got even a chance to be featured in Time magazine last year because of the demonstration that I set up in one of the region in Kampala, in one of the area in Kampala. So this campaign caught out of attention, but also it came with a lot of threats. And when you check Civicus, they have my article where I was talking about the situation I was going through because I had even to move out of the country in June last year to wait until the process actually calmed down so that I go back. So it was scary, but it never stopped me. It never stopped me because what we need is to make sure the people are protected, not the profit. So many times leaders talk about
how they are going to help us when they are coming into certain position during the campaign. They say, we are going to help you do this, we are going to help you do this. But once they reach the office, they start thinking about profit and they don't care about people. So that is our role, because we cannot achieve climate justice without including the marginalized communities, the people who have been affected, the migrants today. When you look at what is happening in other countries like Somalia, over 6.5 million people are facing acute hunger. And when you look at the children that side, they are facing high rate of malnutrition. So this kind of suffering is actually not their problem. It is on our leaders who lie once they reach the office. So that is our role. And when you talk about this crude oil pipeline, this is fossil fuel. We have better alternatives like renewable. Africa is gifted with sunshine. We receive our sunshine almost every year, full year. But we have failed to use this chance to actually channel our investment into renewable. We can have wind, we can have geothermal energy, we can have solar energy, but imagine, even in Uganda, the biggest part of Uganda, it doesn't have electricity. And they are saying it is through this pipeline that we'll be able actually to generate hydroelectricity power. But when you look at who is getting the biggest amount in this project, it is the Total, because Total owns over 62%. And CNOOC, the one for China, owns over 15%. So when you look at that, Uganda only gets around 18 to 20. So you ask yourself, how are we going to use this 20? We generate the entire country, and you are evacuating people whom you are not actually giving the best alternative. Where are they going to stay? It is one thing to give me a house and another thing to give me a source of survival, because once you give me a house and I can't get where to survive from, I will sell the house and I leave the area and I will struggle the rest of my life. But remember, this is my ancestral land. I can grow food. I can do everything. It goes back to where I started, that I was a victim to climate change. We were washed away. We left the home. And now today, instead of working for our future, we are working for the landlords. We are working to survive. You know, this shouldn't be like this. People have to stay where they are. And also, the time to talk about fossil has come to an end. People have received a lot of, they have gone through a lot of the impacts of climate change. When you look at what was happening in June, heat waves were everywhere. Canada was burning, as northern India was flooding. So all these injustices are coming because the fossil fuel industry is not ready to stop that kind of behavior of investing in dirty energy. So in this situation, I've been trying to mobilize, I've been trying to go to schools, educate young people about the impacts of climate change. I started this earlier in 2022, where we have been calling this campaign Climate School. The mission here was to bring more voices in the fight, to give them a chance to start challenging policy. We were not taught about climate change, but we believe the chance we have got to do some research, we have the information. So it is our role to spread it all over, to show it to young people that, you know what, your future, you might think that your future is at school. Actually, your future is out here. So you need to stand up and do something. You can do something by empowering others. You can do something by challenging policies. You can do something by pushing climate education in school. Ask your teachers about it. Tell them what is really happening. Why don't you go deep and talk about the root cause of heat waves, the root cause of drought, the root cause of some of the diseases we are seeing today? For example, cancer. For example, there is a pollution everywhere. And the biggest number one polluter in the world today is Coca-Cola. But this same company, Coca-Cola, is not supplying plastic in the West, it's supplying plastic in Africa. So these are some of the questions we have to ask our people, our teachers, our policymakers, that you guys, you say you are ready to transition, but we don't see progress. But in other countries, this progress is actually happening. So is it that you are trying to kill us intentionally, or you have another mission?
So this is why we decided to engage young people in this so that they can speak for themselves. And I'm so happy that last year I was given an award as Earth Champion 2022 because of my role and my team for educating and empowering young people. So that's me. I thank you so much. Thank you, Nyombi, for that enlightening talk. Taking a step forward towards something new to bring a change in the community, as you said, is not something easy. I'm pretty sure the whole audience is inspired by your works and words. Now we are starting with the 1-minute Q&A session. So you all are requested to raise hands if you have any questions for Mr. Morris. Well, I think the audience has already very well understood what you wanted to convey, Mr. Morris. But here I wanted to ask you a question. Since you work with the youth, how do you find passionate people who have the same mindset for the environment? And how do you set the example for the non-passionate ones towards the climate? Thank you so much. First is it is very hard to identify who is passionate and who is not. But what I do has been so much on calling. Whenever I organize events, I call up those who are interested in planting trees, those who are interested in community cleanup, those who are interested in climate education. Whenever they come, those are the people I actually value so much. So those are the first people I put on top because beside passion, even if they don't know what to do, they are ready to learn. So that is the first thing. The people who don't know, sometimes what I do is to share through social media, talk about some of the events that are happening in our country so that they can learn, even if you don't like. If someone happened to share and you land on the post, you can learn from me and be like, I think I should care about something. I should care about this. But also we have been setting up events within the community to do some community mobilization, but we receive a lot of backlash because some people are actually being maybe brainwashed at some point where they believe that there is nothing to do with climate. So we are still having some difficulties whenever we go to communities and try to sensitize. We receive backlash because people are focusing actually on how are we going to get the money that will help us buy food tomorrow. So they don't care about what they do as long as they're ready to receive something in the end. So that's a difficulty we have, but we try our best to set up community mobilizations, but the number is still down. We need everyone actually to engage into climate action. But as I said, we are not taught about climate change. Even those who came before us were not taught about climate change. So the blame might not be on them. The blame is on our leaders who have failed to push climate curriculum in school so that everyone comes out knowing where to invest, knowing where to put their money. But today, even you might find that your OG is the one investing in crude oil pipeline, is the one financing that project you fear. So the knowledge is still lacking, but the blame is on the leaders. Thank you. Thank you, Mr. Morris, for your valuable insights. Moving forward, the next on the list is a hard-working social and environmental actionist who started his journey by hanging a plastic container on his back with a tree inside it, from which came a pipe joining his oxygen mask. He stood on roads to symbolize the need for a less polluted and a greener environment. And today, he himself is working for a better environment through awareness and actions. The list of his impact is endless and could not be explained better than the man himself, Mr. Pankaj Kumar. Over to you, sir. Thank you very much, Risita, and Arav and your team for doing a wonderful job. And thank you for inviting me. देखिए, अब जब एक्शन की हम बात करते हैं कि हमें एक्शन क्या लेना है, तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्शंस क्या होना चाहिए.
अभी जो बहुत सारे बच्चे अभी इन्वायरमेंट में आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि ज्वाइन कर रहे हैं नए बच्चे. Like all the youngest, you guys are doing wonderful job, and all other people are coming into it. But we need to identify our local issues. What are the issues that we can change in our surroundings? Like if you are staying in Delhi, what is the biggest issue in Delhi? You will see the Yamuna is polluted. सो फर्स्ट प्रायोरिटी वी हैव टू हैव कि हम हमारे जो लोकल इशूज है हम उनको देखें कि यमुना के पोल्यूशन का कारण क्या है. कि वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट एक्शन, या वी हैव टू टॉक इट, बट वी नीड टू डू एक्शंस which are impacting us directly. Like Yamuna pollution is impacting whole Delhiites. The dump yard of Gazipur, landfills that we are seeing around everywhere in Delhi NCR. So, what are the actions we can take to eradicate these things? Okay. First, we need to make our government accountable. कि आप देखिए हो क्या रहा है कि मैं जब यमुना क्लीनिंग स्टार्ट किया था, तो होता क्या था कि जब हमारी टीम जाती थी यमुना क्लीनिंग पे, तो वहां पे मेडिकल वेस्ट मिलता था. मेडिकल वेस्ट में क्या मिलती थी हमें यमुना में? अब देखिए कालिंदी घाट दिल्ली में होता क्या है कि मेडिकल वेस्ट, ब्लड के सैंपलिंग, यूरिन के सैंपलिंग और इंजेक्शंस अलग अलग दवाइयों के. तो आप सोचिए कि मेडिकल वेस्ट एक अथॉरिटी, एक मेडिकल वेस्ट, एक मान लीजिए कि पढ़े लिखे सबसे, हमारे जो हॉस्पिटल्स चलाने वाले लोग हैं, डॉक्टर्स है, देश के सबसे पढ़े लिखे तबके में से आता, बट दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब प्रॉपरली. दे आर डंपिंग देयर वेस्ट बैंक ऑफ अ रिवर. द रिवर यू कॉल्ड मदर, यमुना को हम माँ कहते हैं, वहां पे आप जो है पोल्यूट कर रहे हैं, वहां पे आप जो है मेडिकल वेस्ट डाल रहे हैं. क्योंकि और सोचिए वो मेडिकल वेस्ट जो है किसी भी बीमारी का हो सकता है, एड्स का हो सकता है, कैंसर का हो सकता है, किसी भी सैंपल हो सकती है, वो आप यमुना में डाल. वो क्या रहा है, वो पानी आप यहाँ से जो है ये बह के जा रही है वृंदावन, गोकुल, वहां पे लोग जो है उसी पानी का आचमन कर रहे हैं. सो वी हैव स्टार्टेड फाइटिंग फॉर दिस, एंड नाउ वी आर ऑलमोस्ट, वी आर नॉट सीइंग मेडिकल वेस्ट एट बैंक ऑफ यमुना रिवर. तो एक बात ये कि जैसे ये एक प्रॉब्लम है. दूसरा कि हम लोग प्लास्टिक्स की बात करते हैं, सारे बच्चे प्लास्टिक्स की बात करते हैं. जब हम ओशन पोल्यूशन की बात करते हैं कि हाँ प्लास्टिक का पोल्यूशन जो है वो कम होना चाहिए, प्लास्टिक्स डंप नहीं होने चाहिए, माइक्रो प्लास्टिक जनरेट हो रहे हैं उससे. उसके साथ साथ देखिए एक बहुत बड़ी चीज है जो मोस्ट ऑफ अस आर मिसिंग राइट नाउ. ओके, और वेरी लेस पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट. दैट इज अ ड्रेन, जो सीवेज है आपके नाले जो मिल रहे हैं, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, जितने भी आप देखेंगे दिल्ली में, जब आप वजीराबाद डैम के पहले है, वजीराबाद डैम के पहले यमुना आप देखेंगे जल लगभग ओके ओके, मतलब ऐसा नहीं कि आप पी सकते बट नहा सकते हैं वजीराबाद डैम के बाद. आफ्टर क्या हो रहा है वजीराबाद डैम कि वहां उसके बाद जो है यमुना का पानी छोड़ा नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो है आपको नाला छोड़ा जा रहा है. सिर्फ नाला बह रहा है और वही नाला बहते यहाँ से पूरी दिल्ली में जा रही है. 1376 किलोमीटर की यमुना है, उनमें से 400 किलोमीटर आते आते हमने यमुना को मार दिया. रिसेंट रिपोर्ट में बताता हूँ, मार्च 2023 की रिपोर्ट है. रिपोर्ट था कि ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला के आगे गंगा का जल आचमन के योग्य नहीं. ये मैं गंगा की बात कर रहा हूँ. ऋषिकेश मतलब उत्तराखंड, हरिद्वार से पहले गंगा आचमन योग्य नहीं, और ये कानपुर जाते जाते नहाने के लायक नहीं बचता. और गंगा जब बिहार और बंगाल जाती है तो वो किसी लायक नहीं बचती. 2500 किलोमीटर की गंगा, आप 1000 किलोमीटर में गंगा को मार दे रहे हैं. आप 1400 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली यमुना, आप 400 किलोमीटर में यमुना को मार दे रहे हैं. ऑलमोस्ट हमारे देश की सभी नदियों की यही हालत है. तो और ये पोल्यूशन क्यों हो रहा है? पोल्यूशन हो रहा है कि हम जो है अनलिमिटेड सीवेज जो है मिला रहे हैं नदियों में. आप देखेंगे कि चाहे नदबगढ़ ड्रेन हो, आप दिल्ली में है तो आपने देखा नहीं होगा, या जैसे सहादरा ड्रेन हो, तो या होम नाला हो, ये जो है ये सारे जो है ट्रीटेड, हाफली ट्रीटेड जो है नदियों में जा रही है, जो कि बहुत बड़ा कारण है पोल्यूशन का. एंड अभी रिसेंटली हम लोग जो है एक पद यात्रा कर रहे थे हरिद्वार से लेके गंगोत्री तक का. हम लोग वहां तक गए पद यात्रा में. What we identified, we have reviewed more than 100 STPs, okay, and all the STPs, okay, when we look at the water STPs, okay, none of them following the NGT the parameter. NGT का parameter है कि जो STP के water होंगे उनके जो BOD 10 से नीचे होना चाहिए, उनके जो ये हैं आपके क्या कहते हैं फीकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया, वो 200 के नीचे होनी चाहिए. बट कोई भी STP जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है गाइडलाइंस. इवन देयर आर, आई सॉ द STPs which are only excluding solid waste. वो क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक से कपड़े वो निकाल लिया, बाकी के जो है वो जा रहे हैं नदी में और वो हमारे नदियों को पोल्यूट कर रहा है. देखिए हम सब जानते हैं कि हमारे
पीने का जो सोर्स है वो नदियां है सबसे बड़ी, वो है तालाब है। तो हमारे लिए एक जरूरी होता है कि हम हमारे आसपास अगर कोई तालाब है या कोई नदी है तो हम देखें कि क्या उनके साथ जो है मतलब दुराचार किया जा रहा है सरकार के द्वारा, आम पब्लिक के द्वारा। सो वी नीड टू सराउंड फॉर द रिवर, वी हैव टू स्टैंड फॉर द रिवर एंड आवर पॉन्ड्स। आज से मैंने सुना कि 1947 के आसपास जो है दिल्ली में 800 तालाब थे, आज 8 तालाब नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल द जो जितने भी तालाब थे ड्राइड अप हो चुके हैं, उन पे मॉल बना लिए, कुछ और बना लिए, घर बना लिए। अभी रिसेंट एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि 1947 में हमारे पूरे देश में 24 लाख तालाब थे और अभी जो है 2,30,000 तालाब सिर्फ बचे हुए हैं देश में, पूरे देश में। तो आप सोच लीजिए हमने लगभग 70 साल के इस आजादी के दौर में 22 लाख तालाब जो आपके वाटर का सोर्स है उसको आपने खत्म कर दिया। देखिए तालाब की इंपॉर्टेंस क्या होती है और बचाना क्यों जरूरी है तालाब को। एक होता है कि मान लीजिए हम गंगा यमुना, एक जो हमारी माँ है जिसको हम नदी हमें जीवन देती है, तो गंगा क्या होता है, गंगा मान लीजिए उत्तराखंड से बह के गई, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, फिर आपको जो है बिहार, झारखंड होते हुए बंगाल से, फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बट जो आपका तालाब होता है आपके गांव में, आपके घर के पास जो होता है, वो पानी जो होता है वो आपका अपना पानी होता है। उनसे आप जो है मतलब आप घर के कामों के लिए यूज कर सकते हैं, नहा सकते हैं। और अगर मान लीजिए हम तालाब के पानी का इस्तेमाल करने लगे, अगर हमारे पास तालाब हो इन कामों के लिए, जैसे मान लीजिए कपड़े धोने के लिए हो गया, या नहाने के लिए हो गया, या मान लीजिए पशुओं को पिलाने के लिए हो गया, तो हम क्या होगा, वो जो ग्राउंड वाटर हम जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमें एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जो है ग्राउंड वाटर सेव कर सकते हैं अगर हम तालाब बचाएं। तो देखिए एक्शंस की जब हम बात करते हैं तो वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द एक्शंस दैट आर इमीडिएट टू टेक। ओके, एक तो होता है कि हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं, उनके साथ देखिए अभी हम जो अभी 4 से 5 स्टेट हम लोग लास्ट 6 महीने में हमने घुमा है। तो एक बात है कि अगर आप 2016 की जो जो हमारी जो लॉ है, मतलब वेस्ट मैनेजमेंट की लॉ है, उनमें इनफ रूल्स और रेगुलेशंस है जिससे हम जो है अपने वेस्ट मैनेजमेंट को बेटर कर सकते हैं। बट अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे, ओके, वी वर टॉकिंग टू द पीपल हु आर वर्किंग इन द ग्राउंड, ओके, तो होता क्या है कि दे एक्चुअली डोंट नो टू सेग्रीगेट द वेस्ट, दे आर नॉट इवन टॉट। उनको बताया नहीं गया कि आपको सेग्रीगेट करना है, गीला को, सूखा को, हजारस को। उनको सिंपली है कि आप कलेक्ट करिए, जला दीजिए। उत्तराखंड के आप किसी भी जिले में चले जाइए, वहां पे जो है वेस्ट को जलाया जाता है खुलेआम, सरकार के सामने, पुलिस के सामने, बट कोई बोलने वाला नहीं है। कि अगर आप 2016 के लॉज को देखते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट जो हमारी पॉलिसी आई उसके हिसाब से अगर हम कचरों को जलाते हैं तो वो एक तरीके का क्राइम है, बट गवर्नमेंट himself is committing the crime. When I talk to those people who are working on the ground, even their seniors, they are not properly aware of the policies. What are the policies? What should be done? तो एक मुझे बात क्या लगी कि प्रॉब्लम कहाँ आती है कि एक जो हमारे पॉलिसी मेकर्स है और एक जो ग्राउंड पे काम करने वाले, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है कि ये ये तो ऑर्डर पास कर देते, इसने एक फैसला सुना दे कि आपको ये करना है, बट दे आर नॉट टॉकिंग टू द पीपल हु आर ऑन द ग्राउंड। यार कैसे करना है, अगर अगर नहीं कर पा रहे तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, दे आर नॉट टॉकिंग टू दैम। आप देखेंगे कि अपने देश में या पूरे वर्ल्ड में हम पॉलिसीज बनाते जा रहे हैं, ओके, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन। व्हाई वी आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी दैट वी हैव ऑलरेडी मेड। तो वो बात है कि एक तो है कि जो हमारे देश में या अराउंड द वर्ल्ड आप ले लीजिए कि जो पॉलिसी मेकर्स और जो ग्राउंड पे वर्क करने वाले के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, जो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है कि हाँ अगर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो बंदा काम कर रहा है ग्राउंड पे, उनको क्या क्या चाहिए, उनसे आप बात करिए कि चलिए आप जो है कचरा अगर आप नहीं कर पा रहे हैं मैनेज तो क्या प्रॉब्लम है। अभी उत्तराखंड में हर जगह पे कचरे जल रहे हैं, जब मैंने उनसे बात की कि आप क्यों जला रहे हैं, वो कह रहे कि हमारे पास कोई, हम डाले कहाँ इनको कहीं। तो वो क्या करते हैं, एक छोटा सा उसको ट्रॉली मिलती है, वो ट्रॉली पे कचरे उठाए, एक गली से उठाया लेके आया, गली के ऊपर में डाल दिया, वहां पे उसको वो आग लगा देते। 10 गली का एक बंदे ने उसको दे दिया है, वो 10 गली का लाके जला देंगे। अब अब उस बंदे को आपने तो काम दे दिया कि इसको यहाँ लाके आप यहाँ रख दीजिए, बट यहाँ से उठाने का काम कहाँ है, जो एक जगह पे जमा हुआ वहां से उठाने का अपर लेवल के लोग जो वहां से उठवा के आप जो है किसी एक ऐसे जगह पे उन कचरों को ले जाइए जहाँ पे आप जो है उनको सेग्रीगेट कर सके, जो रिसाइकल हो सकती है, रीयूज हो सकती है, आरएफडी हो सकती है, उनका इस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। बट एक वही लगती है कि हम पॉलिसी तो बना रहे हैं, बट अभी भी लाइक
हम अभी 2023 में बस इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे ग्राउंड पे कुछ भी नहीं हो रहा है ना, तो क्या ही बताए। मतलब अभी हमें कभी भी लगता है कि हम अभी भी मतलब वो सेंचुरी में है जिनको फर्क ही नहीं पड़ता है। एक तो है कि सेंसिटाइज नहीं कर पा रहे हम अपने उन लोगों को जो ग्राउंड पे वर्क कर रहे हैं, जो एसटीपी जो काम करते हैं बच्चे, मैं गया था, जो लोग काम कर रहे हैं एसटीपी पे, दे एक्चुअली डोंट इवन नो व्हाट इज द सॉलिड वेस्ट, व्हाट इज द लिक्विड वेस्ट। उनको पता ही नहीं है, उनको बस वहां पे रख दिया गया है। बट उनको पता है कि यहाँ पे आई वेंट टू कानपुर, ओके, एक शीतला बाजार के पास एसटीपी, मेरी जो है फाइट हो गई उनके ऑफिसर के साथ। आई वॉज आस्किंग दैट कि मुझे पानी चाहिए सैंपलिंग के लिए, बोला पानी दे देंगे, ओके। मैंने कहा इट्स ओके, आप अगर पानी नहीं देना चाहते तो वो बोल, मैंने पूछा कि क्या आप क्या सेग्रीगेट कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने बोला आप सॉलिड वेस्ट सेग्रीगेट कर रहे हैं। तो उनको ये भी नहीं पता था कि वो क्या सेग्रीगेट कर रहे हैं, दे आर नॉट इवन अवेयर ऑफ द सॉलिड वेस्ट। सो सोचिए कि ग्राउंड पे जो लोग अभी हमारे पास हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, अगर वो अवेयर नहीं है कि सॉलिड वेस्ट क्या है, अगर हमें कोई काम दिया गया कि हमें जो है वेस्ट को मैनेज करना है, अगर इफ वी आर नॉट अवेयर ऑफ द हैजार्डस वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, आरएफडी, so how will we manage those things? So एक तो है कि अगर हम अगर डिमांड करते हैं, एक तो हमें एक्शंस तो लेना ही, उनके साथ साथ जो है हमें गवर्नमेंट से ये भी डिमांड करना पड़ेगा, जो लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उनसे आप बात तो करिए कम से कम, कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो पा रहा है काम। बट बात हो रही कि हम पॉलिसीज बना देते हैं, ग्राउंड पे हम जो है ना वो लोगों से हम बात ही नहीं कर पा रहे। मैं दिल्ली के इंद्रप्रस्थ की एक स्टोरी बताता हूँ, ये जो है जून की है, ओके। 30 मई और 1 जून की बात है कि अभी मैनुअल स्क्वेंजिंग बंद है, ओके। वहां पे क्या होता है, इंद्रप्रस्थ में एक होम नाला है, उसका एक एसटीपी है, उसमें सॉलिड वेस्ट निकालने के लिए एक जो है वर्कर जो है वो अंदर जाता है उस नाले का। आप सोचिए वो कितना गंदा नाला होगा, ओके। बिना किसी इक्विपमेंट के इतना डूबा हुआ है, वो वहां से सॉलिड वेस्ट निकाल रहा है। सो एक है कि प्रॉपर मैनेजमेंट, एक कम्युनिकेशन गैप, ये कुछ चीजें हैं जो हम सबको जो है इनके लिए गवर्नमेंट से डिमांड करनी पड़ेगी कि वो लोग जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं उनकी ओर ध्यान दें और उनसे बात करें। पॉलिसी मेकर कुछ नहीं कर सकते जब तक हम ग्राउंड पे जो लोग हैं, जो समझते हैं चीजों को, जो काम कर रहे हैं एक्चुअल में, हम उनसे नहीं बात करेंगे तो दैट वो चीजें जो है हम लोगों को सब मिलकर, जैसे आपको हम सब मिलकर भी आवाज अलग अलग चीजों में उठा रहे हैं। एक हमें है कि अगर हम चीजों को मैनेज करना चाहते हैं, ये भी हो कि हम ये जो ग्राउंड पे वर्कर है उनको कैसे हम सेंसिटाइज करें, इन चीजों के लिए आवाज उठाए। एंड ज्यादा क्या बोलूं मैं, ज्यादा टाइम तो नहीं दूंगा। एंड देखिए, और एक इशू है कि जब हम बात करते प्लास्टिक की, हम इवन जो है प्लास्टिक लेते तो हम कहते कि काटना भी हमें ऐसे है, हमें जो है रिसाइकल करना है। बट रियलिटी क्या है गवर्नमेंट, देखिए दो अभी जो हमारा प्लास्टिक प्रोडक्शन है वो 3.5 लाख करोड़ की है, 2023 की बात कर रहा हूँ मैं। और अभी रिसेंटली मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उनमें था कि आने वाले 4 सालों में 2027 तक ये 10 लाख करोड़ का होने वाला है। हम जो एक प्लास्टिक के पैन की बात करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए प्लास्टिक का, इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढे, बट सरकार तो 3 गुना प्लास्टिक की प्रोडक्शन बढ़ा रही है। तो वी ऑल्सो नीड टू रेज द वॉइस कि प्रोडक्शन क्यों बढ़ा रहे हैं। अगर everyone is agreeing on one thing, that plastic is a problem, it's a polluting our earth, polluting our ocean, but we are not, why government is raising the production is going not, ऐसा नहीं है कि 3.5 लाख का है तो 4 लाख करोड़ का हो जाएगा, वो 10 लाख करोड़ का होने वाला है, मतलब 3 गुना ज्यादा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मतलब किस तरीके की जो है ना सिचुएशन में हम जाने वाले हैं। गवर्नमेंट बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है कि सब कुछ अच्छा है, बट ग्राउंड पे बहुत कुछ बुरा है। इवन हरिद्वार हम गए थे, हरिद्वार एक बहुत ही ज्यादा जो है रिलीजियस प्लेस है हमारे देश का, बट वहां पे मैंने देखा बहुत सारे नाले ओपनली गंगा जी में मिलाए जा रहे हैं। बात यह है कि आप अगर गंगा, यमुना, नर्मदा को पोल्यूट करोगे इस देश में, तो आप कैसे बचाओगे इस देश को? कैन वी इमेजिन इंडिया विदाउट गंगा और यमुना, नर्मदा? कैन वी इमेजिन इंडिया विदाउट अरावली? कैन वी इमेजिन इंडिया विदाउट अरावली, विदाउट हिमालय? वी आर रूलिंग द हिमालय। आप जाओगे, मैं अभी पद यात्रा जो कर रहा था, हिमालय में ना जाने कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक पॉलिसी है उत्तराखंड में कि जो है ना गंगा के 200 मीटर में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। ये गवर्नमेंट की उत्तराखंड गवर्नमेंट की पॉलिसी है। आप देखोगे अभी जो रेल प्रोजेक्ट बन रहा है, जो जोड़ने के लिए उत्तरकाशी से जो
ऋषिकेश से उत्तरकाशी के बीच में। उनमें क्या है कि 10 मीटर 15 मीटर के बगल, गंगा के बगल में जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है, और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को खुद ही नहीं फॉलो कर रही है। तो थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू ऋषिका। Thank you, Mr. Pankaj, for your valuable insights. Now, we would Adi, like Adi, to I would like request. to say something. Adi, I would like to Yeah. say something here. पंकज, मैं बहुत बहुत थैंक यू करूंगी आपका, क्योंकि आपने जो आज बातें कही हैं वो आई ओपनर है हम सबके लिए, जो भी अटेंड कर रहे हैं आज प्रोग्राम। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हम सिर्फ न्यूज में देखते हैं और हम टीवी बंद कर देते हैं उसके बाद। आपने जितने भी बातें बताई अभी कि लोगों को जो क्लीनिंग करते हैं उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, वो इतना नाले के अंदर घुसते हैं सॉलिड वेस्ट निकालने के लिए। कितनी पैथेटिक कंडीशन है, और हम देख के नजरें बंद कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हम से बहुत सारे लोग ये चीज देखते हैं न्यूज में, बट हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। बट इस तरह के सेशंस जो हो रहे हैं, छोटी यूथ को जागने की जरूरत, बहुत जरूरत है कि हम सब एक साथ काम करें। गवर्नमेंट के लेवल पे बहुत सारे जो आपने बोली, आप जैसा पैशनेट आदमी इंसान, मतलब आप अभी कह रहे थे कि नहीं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब पैशन होता है, जब अंदर दुख होता है, अंदर चुभती है जब बात, तो आपका बोलते हो आप, आपका मन करता है कि आप भी और भी चीजें शेयर करो। बहुत चीजें गलत हो रही है। मैं भी खुद भी, मैं हिमाचल को बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ क्या हो रहा है। कैसे जो आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हो कि गवर्नमेंट नदियों के साथ में जो जो रूल्स हैं, उसके जो लॉज बने हुए हैं, उनको वो खुद ही फॉलो नहीं कर रहे। तो ये मैंने देखा है, तो बहुत पेनफुल चीजें हैं जो निकलती हैं बाहर आने। सॉल्यूशंस भी होते हैं, बट अभी टाइम लगेगा, हम सबको टाइम लगेगा। बट दिस इज द टाइम। आप जैसे लोग हैं, आरव जैसे लोग हैं, और ये प्रेरणा है, बहुत सारा काम कर रही है, नॉम्बी मॉरिस काम कर रहे हैं। तो it's like it's a chain. If we keep continue doing this together, making people aware, making it's not just awareness now. बहुत लेट हो गए, अब तो एक्शन का टाइम। तो थैंक यू सो मच। I mean, I can understand very well, relate to जो भी आपने कहा अभी। Thank you so much. Adi, continue. Absolutely. Yeah. So we would request you to raise your hands for a 1-minute Q&A session. Do you guys have any questions? Okay. So I guess the audience is already very inspired. So yeah, I would like to ask you a question, Mr. Pankaj. So like during the campaigns, while you were working for the environment or during the cleaning drives, so sometimes the local communities resist. So how do you tackle the resistance? Like sometimes we also face resistance during plantations or cleaning drives. So how do you tackle the resistance of the local communities, or like anytime, like if you face any resistance from the local communities? देखिए, लोकल कम्युनिटी का रेजिस्टेंस तो हम लोगों के साथ अभी नहीं आया। होता है कभी कभी, कुछ लोगों को बुरा लगता है हमारा काम। तो देखिए, होप करना यह है कि हमें तो जो है बदलाव लानी है। ठीक है? कोशिश करते हैं कि उनको भी समझाए। और देखिए, एक बड़ी अच्छी डायलॉग है सरकार मूवी की, ये कहता है कि पावर जो है ना, लोगों को जोड़ने से होता है, तोड़ने से नहीं। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको भी अपने साथ लाए, और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम, उनको अगर हमारे काम से कोई प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है, और क्या चीजें हैं जो हम कहीं हमें उनको लग रहा है कि गलत है हमारे। क्योंकि मैं नहीं कहता कि मैं हमेशा सही हो सकता हूँ या मैं हम सही हूँ। तो हमें ये चाहिए कि जो हमारा, जो कोई अगर हमारे अगेंस्ट है तो हम उनको सुने कि हमारे अगेंस्ट है क्यों। और मैं अगर उन कहीं भी होता तो कोशिश करता हूँ कि उनकी जो मतलब की है कि किसी वजह से वो अगेंस्ट है हमारे, तो हम समझाने की कोशिश करते हैं। और ज्यादातर टाइम जो है ना, कामयाब होते हैं समझाने में, उनको बताने में कि हम करना क्या चाहते हैं, हम हमारा मकसद क्या है। जी। Absolutely, absolutely. So it's like very nice if you can explain, and yeah. So I guess Miss Richa Bansal also wanted to ask a question. So yeah, I would like to unmute. Yeah, I'll unmute her. Just Mr. Chavansu. Good evening, sir. Myself, Vibukan Bansal. And I just want to ask that we are talking about environment.
we are talking about how can we save environment, and we are talking about demerits and merits and all. So I just want to ask that there are also people who don't know about this. People who don't know that we are talking and we are discussing about this topic. People who are living in their kacha house and they don't have money, they are very poor, and they don't know what is the environment, how can we save it and all. So, sir, how can we spread this awareness and how can we involve them in this action of saving the environment? Uh, Thank you for asking the question. I'm sorry, I didn't get your name. Can you It was Vibhukan Bansal. कान देखिए, एक जब आपने बात कही कि कच्चा हाउस में कोई रहता है तो वो ऑलरेडी हमसे बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट है। अगर कच्चा हाउस में कोई रह रहा है तो इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा जो है वही है, अच्छा काम कर रहे हैं वो, मतलब क्योंकि सीमेंट जो हम बना रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करके ही हम घर बना रहे हैं। तो वो लोग जो जिनको नहीं पता इंटरनेट के बारे में, जो इस दुनिया से कटे हुए हैं, तो वो हमसे बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट है, उनको समझाने की जरूरत उनको है जो पढ़े लिखे हैं। सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी अगर आप देखेंगे दिल्ली में, पूरे इंडिया में कौन है? दिल्ली ऑलमोस्ट मतलब टॉप पे आता है, दिल्ली, महाराष्ट्र, जो बड़े शहर है, और उनमें कौन लोग रहते हैं? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। तो इनको हमें इंक्लूड करना है, जो पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ पे बात ये आती है कि जब हम बात करते हैं कि हमें सक्सेस चाहिए, तो सक्सेस किस तरीके का सक्सेस चाहिए, और हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्या डेवलपमेंट का पैरामीटर क्या होना चाहिए, कि हमें ये बदलना पड़ेगा कि डेवलपमेंट का पैरामीटर क्या होना चाहिए। अब हमारे हिसाब से डेवलपमेंट क्या होता है कि हमारे पास गाड़ी हो गई, घर हो गई, बड़े बड़े बिल्डिंगे बन गए शहर में, देश में, मेट्रो हो गया, बुलेट ट्रेन हो गया, ये डेवलपमेंट का पैरामीटर है। और सरकार भी इसी के पीछे भाग रही है। पर देखिए, एक तो है कि हमें जो है, जो जो हमारा बिगनिंग है, सेटअप है, वो बदलना पड़ेगा डेवलपमेंट का। देखिए, हमारे हिसाब से लगता है कि एक तो हमें, जो लोगों को हम जो सक्सेस की स्टोरी बता रहे कि सक्सेस क्या, डेवलपमेंट क्या, तो हमें बताना पड़ेगा आप डेवलप तब है, या आपका शहर डेवलप तब है, आपका देश डेवलप तब है, जब आपके शहर की हवा अच्छी है, आपके शहर का पानी शुद्ध है, आपके शहर की जो है नदियां साफ है। और इन लोगों को इंक्लूड कैसे करें, उनके लिए अवेयर देखिए कैसे करें, तो एक तो है कि हमें जो है, जो भी लोग होते हैं, ओके, हर कोई तो बात नहीं मानेगा हमारी, बट हम छोटा छोटा एक्शन उनको करने के लिए कह सकते हैं। लाइक कि जैसे होता है कि प्लास्टिक के बॉटल अभी यूज कर रहे हैं, ओके, तो हम उनको कह सकते हैं आप ऑप्ट कर सकते हैं स्टील की बॉटल के लिए। जैसे ऑफिस जाने वाले बंदे हैं, वो जाते हैं, तो हम उनको कोशिश कर सकते हैं आप स्टील की बॉटल लें, ताकि हम प्लास्टिक की बॉटल देने से मना कर दें। हम उनको कह सकते हैं कि आप जो है, जो भी चीजें होती है, जैसे हम अभी खाना वगैरह होता है तो क्या करते हैं कि अ, वो वन टाइम यूज वाले में खाना लेते हैं और खाते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। तो हम कह सकते हैं आप एक स्टील का टिफिन रख लीजिए, उनमें लीजिए। तो ये एक छोटा छोटा चीज है कि आप जैसे नहाने जाते हैं, तो आप बस इतना कीजिए कि आप बाल्टी भर के नहा लीजिए, आपको झरना खोल के या मतलब पानी बह रहा है ऐसे नहीं नहाना है। आप कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्ट करना। देखिए, मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, हर कोई एक्शनिस्ट नहीं बन सकता, हर कोई एक्शनिस्ट नहीं, जो एक्शनिस्ट नहीं बन सकता उनको हम कम से कम कहें कि आप मत आइए ग्राउंड पे, आप ग्राउंड पे काम मत कीजिए, बस आप इतना कर लीजिए, आप जो है स्टील का बॉटल ले लीजिए, आप जो है कम से कम जो है वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑप्ट कीजिए, और घर से बाहर निकलने के बाद इलेक्ट्रिसिटी बंद करिए। जो लोग नहीं आना चाहते, कि हर लोग आ भी नहीं सकते, तो उनको हम ये छोटे छोटे एक्शंस के लिए अवेयर करें। हम, अब एक होता है ना कि कोई बच्चा जो है, अगर मान लीजिए वो साइंस नहीं लेगा, तो उनको हम कॉमर्स, आर्ट्स, मैं किसी चीज को वो नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि कहने की रहा हूँ कि आर्ट्स कमजोर है, साइंस कमजोर है, बट एक जो मेंटालिटी है हमारे समाज की, कोई बच्चा मतलब कि मैथ में अच्छा नहीं है, वो कॉमर्स लेगा, आर्ट्स लेगा, दूसरे सब्जेक्ट्स लेंगे, ओके। तो एक हमें भी उसी तरीके से देखना, अगर वो एक्शन नहीं ले सकते, वो ग्राउंड पे आके काम नहीं कर सकते, तो आप ये एक्शन कर लीजिए, छोटा छोटा बदलाव ला लीजिए, वो बहुत बड़ा बदलाव लाएगा समाज में। थैंक यू। मैं, मुझे लगता है मैं देश। Yes, sir. Yes, sir. I got your point. Thank you so much. Thank you, Mr. Pankaj. So, our third speaker started with a unique idea of an amalgamation between tourism and environment, ecotourism. After studying the area for years, visiting
different eco-friendly hotels, and understanding the real meaning of sustainable tourism, the idea to start EcoPlur emerged in the mind of none other than Prerna Prasad. Over to you, ma'am. Namaste, everyone. I would like to start my talk by taking forward what Pankaj ji said. I completely agree to all the points which he mentioned, and especially to the fact कि जो लोग कच्चे घर में रहते हैं या स्पेशली जो ट्राइबल्स हैं जो अब जो वर्ल्ड के डेवलपमेंट एस्पेक्ट से कट ऑफ हैं वो सबसे बड़े कॉन्जर्वेशनिस्ट हैं बिकॉज उनके जो कार्बन फुटप्रिंट होते हैं वो सबसे कम होते हैं इन कंपैरिजन टू द पीपल लिविंग इन द मेट्रो सिटीज एंड व्हाट ही पॉइंटेड आउट कि द जो लोग मेट्रोज में रह रहे हैं स्पेसिफिकली या टायर 2 सिटीज में रह रहे हैं हमारा जो डेवलपमेंट का मीनिंग है जो हमारे माइंड में बना हुआ है कि डेवलपमेंट मतलब बड़ी गाड़ियां और बड़े सड़कें वो मीनिंग ही कहीं ना कहीं फ्लॉड है उसके अंदर फ्लॉज है सो मेरी जो जर्नी है वो एज अ जर्नलिस्ट शुरू हुई थी आई वॉज वर्किंग इन टीवी जर्नलिज्म फॉर ऑलमोस्ट 8 years एंड आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्टिविज्म तो ऑलमोस्ट मैंने करीब 7 से 8 साल एक्टिविज्म किया है और जो मैं पंकज जी के बातों से मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं वो पैशनेट फॉर व्हाट यू आर वर्किंग ऑन वो एक्टिविज्म जब आप एट हार्ट एक्टिविस्ट होते हैं तब आपके अंदर से वो पैशन निकल के आता है और एक चीज जो मैंने एक्टिविज्म से एंटरप्रेन्योरशिप पे जब शिफ्ट किया 2016 में मैंने जब अपना वेंचर इकोप्लोर शुरू किया तो वो शिफ्ट में मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लर्न करने को मिली वो ये है कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर जो लोग यहाँ समझते होंगे सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स कि हम जिस चीज पे फोकस करेंगे जिस चीज की बात करेंगे वो और ग्रो होगा तो जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं या ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो हम जनरली उसके प्रॉब्लम्स बताते हैं कि ये जो प्रीवियस स्पीकर्स थे उन्होंने भी कुछ प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया लेकिन अगर हम उसके सॉल्यूशंस पे फोकस करें हम इस पे बात करें कि हम पेड़ और कैसे लगा सकते हैं क्या टेक्निक्स हो सकती हैं जिससे हम कम एरिया में और डेंस फॉरेस्ट कर सके क्या टेक्निक्स हो सकती है कि जिससे हम वाटर को बचा पाए और पोल्यूशन से या जो हमारे फॉरेस्ट हैं जो ओरिजिनल फॉरेस्ट हैं उनको कटने ना दें तो हम जो आज का जो यूथ है स्पेशली लाइक आरव वर्क्स की टीम जो इनके सॉल्यूशंस पे फोकस कर रही है सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रॉब्लम्स माइंडसेट से शिफ्ट होके सॉल्यूशन माइंडसेट पे फोकस करें you can be anybody you can be an academician or a entrepreneur or a businessman or anybody or you can just do a simple job but पंकज जी ने एक और पॉइंट बताया कि कुछ लोग हैं जो केवल कुछ मेजर्स फॉलो कर पाते हैं सस्टेनेबिलिटी के और कुछ लोग हैं जो बहुत एक्सट्रीम में जाके भी अपना एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जीते हैं सो एक मेरी कलीग थी उसने ये बात कहा था कि सस्टेनेबिलिटी इज नॉट अ डेस्टिनेशन सस्टेनेबिलिटी इज अ जर्नी सो मे बी मेरे लिए सस्टेनेबिलिटी मैं अपने लाइफ में 5 मेजर्स फॉलो करके सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जी रही हूँ और कोई और ऐसा हो सकता है जो 15 मेजर्स फॉलो कर रहा हो बट वी ऑल शुड मूव टुवर्ड्स दैट सस्टेनेबल जर्नी सो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस सस्टेनेबिलिटी के जर्नी को अडॉप्ट करना हमने शुरू किया है कि नहीं और अगर किया है तो हम क्या क्या मेजर्स मतलब उस जर्नी में हमें अहेड जाना है बैक नहीं जाना है सो अनदर कलीग ऑफ माइन शी मेड अ उसने पक्का किया कि मैं हर हफ्ते एक पर्टिकुलर मेजर अडॉप्ट करूंगी सो फॉर एग्जांपल मैंने इस हफ्ते बायो एंजाइम बनाना सीखा तो नेक्स्ट हफ्ते मैं क्लोथिंग कैसे मतलब सस्टेनेबल क्लोथिंग ही परचेज करने पे फोकस करूंगी तो ऐसे करके उसने हर हफ्ते एक सस्टेनेबल मेजर ऐड ऑन करना शुरू किया अपने लाइफ में और पर्सनली मैं भी अपने लाइफ में वही कोशिश करती हूँ कि मैं कितने ज़्यादा सस्टेनेबल मेजर्स फुलफिल कर पाऊँ and if I moving to EcoPlore what my venture is so at EcoPlore we promote
sustainable tourism. We promote only those hotels which are made up of mud, wood, bamboo, stone, or any local architecture. And it's very important that all these hotels should have a minimum of 30% tree coverage inside their campus. So these are the mandatory criteria which each of our hotels need to follow. And apart from them, there are a lot of other sustainable measures which they follow, like rainwater harvesting, composting, waste management, solar panels, and many others. Most of these hotels are located in large areas which are like starting from 1 acre, and there are hotels which are even in 200 acres and 250 acres with construction just in 5% of the total land. And they even have waterfalls and water streams inside their campus. They grow their own vegetables, they have fruit trees, and there are a lot of activities which people can do inside and around the campus. So the idea is that once they come to the hotel, they don't need to go anywhere else, so the carbon footprint is saved. Plus, because of the construction of the hotel, which is non-concrete, the carbon emission is saved there also. We got a study done through an organization called No Carbon, based out of Europe, and they found out that a luxury hotel based out of India emits 1000 kg carbon per room per night, while an eco hotel emits just 9 kg carbon per room per night. So the difference is huge, and everything depends on our choice. So if we can just shift our choice from a regular concrete hotel to a sustainable hotel, just imagine how much carbon emission we will be reducing through the tourism industry. And there's another data which says that almost 8 to 10% of the total carbon emission in the world is done by the tourism industry. This is huge. और हम airplanes लेने के पहले या फिर hotels book करने के पहले शायद नहीं सोचते हैं कि इससे कितना कार्बन एमिशन होगा. But I think now, because of the promotion of this buzzword sustainability, especially among the youth who are more conscious and more sustainable, we are making a shift in our choices. And most importantly, we personally visit each of the eco hotels which are promoted by EcoFloat, and these visits are done by solo women travelers to assure safety, comfort, hygiene, and the fun elements for the other general travelers who would be booking those hotels through us. And currently we have around 250 plus eco hotels across the country. At the end, I would just like to share one or two the kind of hotels which we have. So for example, we have a hotel in Gir in Gujarat, जहाँ पे हमारे balcony से you can see the crocodiles. So there is a river adjacent to the hotel, and it has crocodiles in it. So you can just sit in your balcony and watch the crocodiles. There is another hotel which is in West Bengal in Shanti Niketan, which is known for its cultural aspect. So वहाँ पे उस hotel का building is made out of mud. Their linen, their almiras, their bed, their bed sheet, the furniture, everything is sourced locally from Shantiniketan itself. So vocal for local is something which we also practice. So that's it. And there are a lot of these hotels are mentioned on our website. And we also have a place in Delhi NCR which is called One Bhoj. It is a 25-year-old mud house which was built by architect Preeti and Vasant Kamar, who are pioneers in sustainable architecture. So this is we call it Temple of Sustainability, and we want to make it a living sustainable museum where almost all kind of sustainable practices are followed. And we also have a forest which has peacocks, mongoose, monkeys, neelkant, hornbill, lot of birds. And it is very unbelievable कि ऐसी जगह दिल्ली के अंदर हो सकती है, and it is located in Surajkund. So if you are in Delhi, you are invited to come there and see कि अगर हम right steps लेते हैं तो हम climate change को reverse कर सकते हैं. It is reversible, but सबसे important है हम क्या steps ले रहे हैं. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Prerna, for that inspiring talk.
truly said that awareness is important. We should know what we are working for, but activism is also very important. The idea of working and finding solutions to bring about a change is necessary. Now we are starting with the short Q&A session. Kindly raise hands to ask questions to Ms. Prerna. Okay, so I think the audience is already touched by your words and understands the need for change making for a better future. But Ms. Prerna, people usually prefer the hi-fi kind of hotels or stays for their vacations. So how do you attract people to follow ecotourism or visit your eco-floor hotels? So there is this misconception कि before COVID हमें literally आधे घंटे लगते थे customers को बताने के लिए कि eco friendly hotels comfortable कैसे हैं, hygienic कैसे हैं, because people had this misconception कि अगर एक mud house होगा तो वो leaking ही होगा, या एक local building होगी तो शायद वहाँ पे hygiene ना हो या western commode ना हो. So these are the questions which we used to get when we started. But I can assure you that most of these hotels are run by individuals who are passionate in sustainability, and for them the commercials don't matter. It is they are running these hotels because they believe in sustainability and they live nearby it. So it's like it's not a homestay, but they live next to the hotel. So it's a boutique property run by individuals. And if I talk about the comfort and the luxury and the services, I would say it is best. And I mean, a lot of customers ask कि आपका 3-star है, so people will understand that only by visiting them. Thank you, ma'am. It is really great to hear you. Now to carry forward with the most exciting part of the event, the panel discussion. I would like to invite Ms. Anupam Sharma and Arav Seth. So, hi everyone. I hope you can hear me. Yeah, I guess. Okay, great. So, hi everyone. And first of all, I would like to thank every one of you, each one of you, for becoming a part of today's session at Hope. And when we were thinking about the idea of Hope, about what we want to do in the event, we planned that not only do we want speakers to share their stories and let you know about their challenges, their journeys, but we also want to let you know about their perspectives. And that is what we are going to do through the panel discussion today. We will garner the diverse perspectives about the theme of the session from the speakers, which is related to their domains of work through the engaging panel discussions. And I am sure the questions we are going to ask and their answers would be really enlightening for you as well as for us. So, Anupam ma'am. Absolutely, Arav. Yeah, absolutely. I'm truly inspired by, listening to Maurice, Prerna, and Pankaj. So I have a lot of questions actually. These kids already have asked a few. So I think I would, Maurice, can you hear me? I'll ask my first question to Maurice. Maurice, are you there? Yes. Yeah. Yeah. Okay. So first of all, Maurice, congratulations for the work that you've been doing. I really like the idea of climate schools that you talked about. It's really good, empowering the young generation and taking them on board. You talked about the challenge that you faced, like the people were brainwashed, right? People were brainwashed when you're doing such kind of activities, right? And then I believe that moving from brainwashing people, then brain feeding the young minds with positive impact, right? Positive impact of the environmental action, smaller action, even though smaller action, turning off the lights at home, turning off the TVs at home when not in use, turning off the ACs when not in use, minimizing the use of all the household electrical items.
So they're all the little contributions that even the young, smaller children can do themselves by themselves. So my question is to you is that you are an advocate of climate policies and alternatives on an international level. You're doing that on an international level. So I'm sure that you're also aware about how the government and businesses and the individuals all play significant roles shaping the environmental policies and practices. You're aware of that, right? How the government work, how the policies work, how the businesses work on these environmental actions. So I just want to ask you that how can we encourage the better collaboration between these stakeholders to achieve meaningful change? Because all of us have to work together, all the stakeholders, all the community people, from starting from the local level to the global level, right? So we have to work together. So how can we encourage the better collaboration between all the stakeholders so that we all come on the same page and start working together? Okay, thank you so much for that wonderful intervention and the question. I can say what is stopping us from actually working together right now is lack of trust. Like, we don't trust one another. I've seen leaders, when they come to public, they say when they have come to speak to us. You know, for example, I've ever been at COP27 where leaders come and deliver powerful speech, praise, and so on. But these are the people who say, we have come to listen to you. But when they come with bodyguards. They come with a team of, I don't know. So accessing them is very hard, which makes us believe that we are so different from them, you know? So with that mindset, we feel like we cannot work together because we'll be like, our words or our solutions will not be like endorsed or valued. So I need to first be in a leadership position or in a powerful position so that they can listen to me. So we need to make sure we speak to our people. We tell leaders to try to limit their access, so they try to access them and look at them. There is no that. It is very hard to have a very collaborative, even interaction, because even me today, if I had rejected Seth's request when he sent me an email inviting me to speak, if I had rejected that, he would take it easy, but at some point will be like, now this guy maybe wanted this, or maybe he's seeing that this event is not that powerful. He only speaks on big events, you know, such stuff, because we put limits on ourselves that makes it so hard for people to work with us. So that's what we need to find a way of solving it. Make sure that everyone is welcome in our area, in our community, in anything we do. So I believe in that. That's the only way. Thank you. Agree. Thank you. Thank you so much, Maurice. I think that you have said a very, very big word, that's trust. Matter of trust. It's very important for all of us to have trust. And especially, look, we work at ground level. So you are working at ground level. You know the actual reality. But the people at the government level, they do something else. I mean, their actions, their words, they are not matching with their actions, right? So something I think if we all raise voices, like people at different places in the world, if we start raising our voices together, we understand something like raising the petition. Our people raise, like we sign the petitions and we send to the government, right? So there are certain channels when we start connecting with the channel and they directly talk to the government, right? So there are stepwise actions that we could take, and I'm sure that when it comes to the positive impact on the environment, when everybody's going to fall, like what is the future we see? We see the future as of now, we see it dark, right? We talk about, we attend meetings, we talk about a lot of things, but actually the thing is like future is dark. So when everybody, all of us
come at the same page and we all start talking about or start raising the voice on the things that we need. This is our right? A basic right to breathe in a fresh air, a basic right to have a clean drinking water, a basic right to have a good education, right? So if all these actions, if everybody start working together, develop trust within us, like you and I have a trust with each other, our you and everybody, like we have a trust with each other, then we'll be able to create, that knock on their doors that yes, we trust each other. Now you got to trust us. Yeah. I think that's going to work. Ara, what say? Prerna, I think this is something that we all agree to, right? Yeah, Trust I is very completely important. agree with you, Anupam. In fact, I was thinking it over in my mind, and I got a point in my head that when we are talking about being together for any actions, I guess the main area of lack of trust and lack of and conflict is because of lack of goal alignment. We never seem to get what we want, and uh, and it is because of that we do not have clear goals in our mind, what we want to do with humanity as a whole or with the people of our country as a whole, that we are unable to build the trust with each other, and we're unable to get united for one single cause, for once and for all. And this moves me into my second question to Mr. Pankaj. And before I ask him the question, I guess it is important for me to say happy birthday to you, sir, because even though I was so caught up in the event, I just realized that I still have the chance to say happy birthday to you uh, during this panel discussion when I get a chance to interact with you. So thank you for inspiring me, and I'm sure you'll consistently pursue your area of work. So thank you for being an inspiration, sir. And moving on to your question, we have seen that you started as an individual who would hold a placard and who would wear an oxygen mask and then stand on roads to depict the worsening condition of our environment. एंड आपको भी याद होगा कि मैं भी आपके साथ आया था। मुझे भी याद है कि हम कितने गर्मी में खड़े होते थे। मैं एक बार आपके साथ आया था, खड़ा हुआ था आपके साथ बहुत गर्मी में। एंड तब से आज आज हम देखते हैं कि यू आर prospering as a leader, working with a team, creating change in the environmental sector by cleaning river Yamuna, bringing awareness about it on the industrial pollution. So what would you recommend to individuals who want to start taking actions? एंड अगर उन्होंने करा भी हो, अगर उन्होंने एक्शंस लिए भी हो और रिजल्ट्स आए ना हो, तो आपको क्या लगता है कि हम उनमें कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड कर सकते हैं और उनके लिए क्या एग्जांपल सेट कर सकते हैं कि वो अपने रिजल्ट्स ला? थैंक यू अरब फॉर द क्वेश्चन एंड थैंक यू फॉर द विशेस। और अरब देखिए, एक बात ये होता है जब हम बात करते हैं कि रिजल्ट के, तो एक है कि अभी जो है, जो हम काम कर रहे हैं वो मैगी नहीं है, 2 मिनट में नहीं होने वाला, टाइम लगेगा इसको। अब देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो जाती है जब हम एक्शंस के बारे में बात करते हैं। मैं अब बताता हूँ, जो ट्रस्ट की बात मैम कर रही थी, देखिए मैम ट्रस्ट हम बहुत जरूरी है ताकि हम जो है आगे बढ़े। उनके साथ एक चीज और है, एक बंदा हमें बागी चाहिए अगर बदलाव लाना, बागी नहीं होगा तो बदलाव नहीं आने वाला। होता कैसे मैं बताता हूँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करा 8-9 महीने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद मुझे अप्रोच करी कि आप मेरे साथ काम करिए, जमुना रिजुवनेशन। We have started working with them. They called me. I went to the DG and they asked me, what are your thoughts? What are the points that you want to raise for the ghat you are working on? Kalandi King Ghat mein more. We have given the 29 points. Okay, so we demanded few things. कि ये चीजें आप करवाइए घाट पे, जो थोड़ा सा बदलाव आए। ओके, विजिबल बदलाव होगा। एक तो होगा कि बोर्ड्स के लिए था, डस्टबिन के लिए था। तो वी हैव वेटेड फॉर 6 months, हमने 6 महीने बाद वेट की, कुछ नहीं आया, क्योंकि दे वर नॉट एबल टू प्रोवाइड एनीथिंग ऑन द ग्राउंड। ओके, एंड होता क्या है कि जैसे कि हम अगर सरकार के साथ काम कर रहे हैं, तो इवन आप देखेंगे आज जो है पूरी दिल्ली में बहुत सारे ग्रुप है, सबसे ज्यादा लोग जो है यमुना पे काम करते हैं,
बट कोई भी जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात नहीं करता। बात क्या हुई कि जितने लोग यमुना पे काम करें सबको सरकार ने अपने साथ मिला लिया है। अब इस पे बात ये होगी, यहाँ तो हो गया कि हम सरकार के साथ काम कर रहे हैं, बट आप जब सरकार के साथ काम कर रहे हैं तो नेगेटिव पॉइंट क्या होती है उसकी, आप सच बोलने से डर लगता है आपको कि रिश्ते ना खराब हो जाए। आई डोंट इवन गो टू एनी गवर्नमेंट प्रोग्राम। मुझे जल मिनिस्ट्री से अवार्ड मिले, मैं अवार्ड भी देने नहीं, मैंने कहा थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए आपका अवार्ड। बात ये है कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, दोस्ती बनती है, ट्रस्ट होता है कि चलिए दोस्ती बन गई, अब मैं इसके लिए, अब मेरी जो है किसी अथॉरिटी से दोस्ती हो गई, ओके बहुत अच्छी दोस्ती होगी, बातचीत हो रही है, अब मुझे कुछ गलत दिख रहा है वहां पे, अब मैं वहां पे बोलने से डरूंगा कि मैं बोलूं कैसे, अरे ये तो मेरा दोस्त है, इसके खिलाफ चला जाएगा। सो समवेयर वी हैव टू बी, कभी कभी थोड़ा सा बागी, कुछ कुछ तबके को बागी होना चाहिए अगर बदलाव लाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या रहा है कि ग्राउंड पे अगर हम जाते हैं तो कोई लोग बोल ही नहीं रहा है। आप देखेंगे नाले के बारे में, जो गंगा यमुना में नाला मिलने की बात है, कोई नहीं बात कर रहा है उसके बारे में। बात गवर्नमेंट सुनेगी कब? अभी लास्ट फ्यू इयर्स, ओके वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नाला, हमने 4 बड़े बड़े नाले बंद करवाए, 2 जो है कानपुर में, एक आपका जो है ऋषिकेश में जो है रंभा नदी में नाला मिल रहा था, उनको भी हमने बंद करवाया। वो बंद क्यों हुआ? क्योंकि इवन जब हम वहाँ के लोकल लोगों से बात की कि यहाँ पे सरकार, लोग नहीं आते थे गवर्नमेंट के, तो वो कहते सर लोग तो आ रहे हैं बट काम कुछ नहीं हो रहा। सो वी कलेक्टेड ऑल द डेटा, पूरा हमने दिखाया कि देखिए ये नदी यहाँ से स्टार्ट होती है। मैं रंभा नदी की बात बताऊँ तो बहुत ही सुंदर नदी, पेड़ की जड़ से नदी निकलती है ऋषिकेश में, वो वहां से बहती है, 500 मीटर के अंदर जाते जाते वो नाला बन जाती है, रंभा नदी, रंभा नाला। सो वी हैव शोन दिस टू द पब्लिक, और हमने इनके खिलाफ आवाज उठाई, और लोगों को लगा कि यार ये बहुत गलत है। एक चीज है तो हमें रियलिटी, रियल इंफॉर्मेशन लोगों तक लाना पड़ेगा, तो वो है कि वो हुई तो वो चीजें बदली, वो नाला अभी बंद हो गया, रंभा नदी पहले से बेहतर हो गई है, और गंगा में वो हर दिन जो है 15 मिलियन लीटर जो है वेस्ट वाटर डंप करती थी, वो अब कम हो गया है, मतलब कि अब बेहतर, कंपेरेटिवली जो है बेहतर है। तो यही है कि कहीं ना कहीं हम सरकार के साथ काम तो करें। हम, आई हैव फ्रेंड इन बोथ द पार्टीज एंड बहुत सारे जो है डिपार्टमेंट्स में है। इवन जो डिपार्टमेंट के लोग मुझे कहते हैं सर इसके लिए आवाज उठाइए, यहाँ पे गलत हो रहा है। दे कॉल मी बिकॉज मैं, मेरे पास अथॉरिटी है, मैं बोल नहीं सकता, मेरी जॉब चली जाएगी, तो वो कहते हैं आप इनके लिए आवाज उठाइए। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आई गेट, दे आर प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट्स। वो कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, आप इसके लिए आवाज उठाइए, क्योंकि उसको एक बंदा तो दिखता है ना कि ये बंदा बोलेगा इसके लिए, ये छिपाएगा नहीं। तो एक ग्रुप चाहिए जो कि बिना डरे बिना झिझके बोले कि हाँ गलत है तो गलत है। तो एक तो है कि ये चीजें हैं। और अब मैं इसको बताने में आपकी क्वेश्चन मिस कर गया, क्या था आपका क्वेश्चन, सॉरी। हाँ जी सर, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो जिन इंडिविजुअल्स जो कि आपकी आपकी आपसे इंस्पायर होकर एक्शंस लेना चाहते हैं, एक्शंस ले भी रहे हैं, तो फिर उनको अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो वो फिर भी कंसिस्टेंसी कैसे बिल्ड करें अपने एक्शंस में, और कैसे गिव अप ना करें अपने एक्शंस। एक एक तो बात है कि हर एक एक्शन जो हम ले रहे हैं, हर एक अच्छे काम का जो है ना अच्छा रिजल्ट होगा, आज नहीं कल होगा, बट आएगा। बट हमें जो है ये है कि एक है कि आपको जो है ना, मतलब एक साथ आप 2 से 3 एक्शन लेने की कोशिश करें। मतलब कि देखिए अब ये होता है कि मैं यमुना के लिए काम कर रहा हूँ, उसके साथ साथ देखिए अगर मैं यमुना के लिए सिर्फ काम करता तो फ्रस्ट्रेट हो जाता कि यार बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वी आर रेजिंग द वॉइस, वी आर क्लीनिंग। हम अभी, मैं एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, जो आइडल से मिलते थे, जब मेरी सरकार गवर्नमेंट से बात हुई थी तो वो कहे थे कि हम जो है वेस्ट को सेग्रीगेट करेंगे और जो है उनको, मतलब उसके हिसाब से जो है डिस्पोज करेंगे। आइडल्स के लिए हम बात की, जो मूर्तियां मिलती है तो उन्होंने कहा कि हम इनको ले जाएंगे, इनको डिस्कार्ड करके जो है इनका यूज करेंगे, बट गवर्नमेंट नहीं हुआ। फिर हमने क्या किया कि सरकार से हमने डिमांड की, उसने बोला भी कि हम करेंगे, बट दे वर नॉट टेकिंग एक्शन। सो वी, मैं गया प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे बात करी, तो उनने बोला कि हाँ इनका जो है यूज हो सकता है कंस्ट्रक्शन में। तो अब क्या होता है, जो भी मूर्तियां निकलती है वो वहां से उठा के ले जाते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं। तो एक है कि हम जो एक्शन ले रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि एक तो कि हम गवर्नमेंट से ज्यादातर डिमांड करते हैं, उनके साथ साथ जो है ना दूसरे, जो आप देखिए प्राइवेट सेक्टर में कौन लोग हैं जो इनमें वर्क कर रहे हैं, वो किस तरीके का मदद कर सकते हैं हमारा। जैसे कि अभी जो है एक हमारे साथ काम कर रहे हैं कार्बन फ्यूजन, तो हमने एक ट्राई किया कि हम जो कलेक्ट कर रहे थे वेस्ट यमुना से, उनको हम वॉश करते थे, 3 वॉश करते थे, उसके बाद जो वॉश, जो प्लास्टिक्स थे, ओके, उन प्लास्टिक्स को हम उनको देते थे, कार्बन फ्यूजन ले जाते थे उनको रिसाइकल्स करने के लिए। तो एक है कि
हमें एक तो हम गवर्नमेंट से मांग डिमांड कर रहे हैं, उनके साथ साथ कोशिश करें कि आप जो प्राइवेट प्लेयर्स है जो इन चीजों में काम कर रहे हैं, ओके, उनसे भी जुड़े और थोड़ा सा कोशिश करें कि जो है ना उनसे अगर कोई किसी तरीके का बदलाव आ जाए, जैसे रिसाइकलिंग है या हम लोगों का, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ओके, तो जैसे मतलब कि मूर्तियों का है और और बहुत सारी चीजें हैं। अब कुछ चीजें नहीं हो रही है, बट आप दूसरा इसके लिए आवाज उठाएं तो दूसरा भी करने लगे जहाँ पे आपको लगता है कि बदलाव आ सकता है। क्योंकि हमें जो है ना, हम ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं कि हमें अगर रिजल्ट ना मिले ना तो हम बहुत ज्यादा हताश हो जाते हैं कि हमें लगता है यार बेकार है, छोड़ देते हैं। तो अगर हम 2-3 एक्शन लेते हैं, कहीं ना कुछ पॉजिटिविटी दिखती है, तो दोज थिंग्स कीप अस चलो चलते हैं उसकी तरफ, वो काम करते हैं। तो ये होता है। तो ये जैसे आप कर रहे हैं, जैसे सैनिटरी पैड्स का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके साथ प्लांटेशन भी कर रहे हैं, उनके साथ साथ आप जो है लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। तो जैसे ये आप 3 चीज लेके एक साथ चल रहे हैं, सो दैट विल नॉट डिमोटिवेट यू बिकॉज यू हैव थिंग्स टू स्विच, कि आप इससे यहाँ से यहाँ। तो वही आप अगर हम 2-3 एक्शन एक साथ ले रहे हैं ना, तो दैट इज द बेस्ट थिंग दैट टू अवॉइड द, लाइक क्या कहते हैं कि जो हमारा जो है फ्रस्ट्रेशन या रिजल्ट नहीं मिलने के बाद जो हम सोचते हैं, वो उससे बचने के लिए। हाँ जी, मुझे आपका बहुत अच्छा पॉइंट लगा सर कि अगर हम एक एक्शन पर ही फोकस रहते हैं, और वो अच्छा है कि हम एक एक्शन कर रहे हैं, बट एक टाइम पर हम फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं अगर हम उसके बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो, उससे हम फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं। इसलिए हमें 2-3 एक्शन एक साथ लेने चाहिए, जिससे कि कहीं तो प्रोग्रेस दिखेगी हमें, कहीं तो हमारे एक्शन रिजल्ट लाएंगे। तो जैसे मैंने भी स्टार्ट करा था व्हेन आई वाज 9 or 10 years। तो जब मैंने भी स्टार्ट करा था तब भी मैं सिर्फ खुद ही प्लांट्स लगाता था और खुद ही चीज़ें करता था। फिर मैंने कुछ ग्रुप्स ज्वाइन करे, फिर धीरे धीरे मेरी टीम बनी, और उसके बाद हमने और भी एक्शंस लेना शुरू करे सैनिटरी पैड्स के लिए, अगर पुअर पीपल के लिए एंड इन्वायरमेंट के लिए भी साथ में। तो धीरे धीरे अगर हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते हैं अपने एक्शंस में, और हम अपना पर्पस याद रखते हैं, अपना विजन याद रखते हैं कि हम किस लिए कर रहे हैं, तो रास्ते अपने आप ही निकल जाते हैं। लाइक आई थिंक एवरीवन नोज द कोट, इफ योर he who knows his why can overcome anyhow. So I guess Anupam ma'am will ask the next Couldn't question. agree more. Couldn't agree more, Arab. I think जो भी डिस्कशन हो रहा है, बहुत ही मोटिवेशन मिल रही है हम सबको कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए, कुछ ना कुछ करते रहें। थैंक यू पंकज, आप बहुत बहुत थैंक यू आपका। माय क्वेश्चन नाउ फॉर प्रेरणा. Prerna, I am just really amazed by learning about the ecoplore that you've started, right? And I think ecotourism is something which is marked as, responsible travel, right? Being very mindful when we travel to the natural areas, right? But you talked about the area in Delhi, which has in association with you, ecoplore. It has area, and there are some areas in Rajasthan you talked about, or in Gujarat you talked about, right? So there are some areas that you mark, and in here in Surajkund, right? You're talking about, yeah. So my question is that what kind of challenges when you started this EcoPlore journey, what kind of challenges you faced? Was it the lack of certification, like was it difficult for people to when they are having a lot of areas, right, big areas, and they want to register for EcoPlore or want to register for ecotourism, right? So is there any challenge that people face in getting the certification for that? Is it like that? When I started, the first challenge was that how do you identify that a hotel is sustainable or not? Because I still remember like there is no such criteria by which a customer can see the hotel and decide for themselves that ये hotel sustainable है. So we wanted to point out those criteria which any customer can see, because we are not a certification company. We are a proper hotel booking company.
तो वो जो 2 क्राइटेरिया हैं कि हम नॉन कॉन्क्रीट बिल्डिंग्स प्रमोट करते हैं जो मिट्टी, स्टोन, बैम्बू इन सब मटेरियल्स के बने होते हैं और जिसके कैंपस में एटलीस्ट 30% एरिया में ट्रीज होते हैं. So these are the 2 criteria which we finalized after almost 2 years of immense traveling across the country and through some theoretical research. So this was the first thing. Second is while I was traveling solo, I did all this travel solo. I realized that there are very few women in the tourism industry. और जो हैं वो most of them are on the reception or call centers. They are not in decision making role. And there is one example I still remember that we went to verify a hotel and we were 4 girls and we asked the manager of the hotel that how many employees do you have. He said that we have 300 employees, and then we asked that how many of them are women. He said only one of them is woman who is the daughter of the owner of the hotel. So that was and that person was very proud to say that he was not having any difficulty. So and he was saying in front of 4 women. So that is the scenario. And that one another reason why I wanted to start EcoPlore was to have more women in the tourism industry, and by which we also want to empower women. The third challenge was when we started promoting these hotels, people really had very less idea or almost no idea what these hotels would look like, because they had not traveled in eco-friendly hotels, and this was something new for them. तो हमें ऑलमोस्ट आधे आधे घंटे लगते थे एक एक कस्टमर को समझाने में कि इस होटल में आपको ये फैसिलिटीज मिलेंगी, एंड इट इज नॉट व्हाट यू आर इमेजिनिंग ऑफ कि लीकिंग मड हाउस होगा और लैक ऑफ कंफर्ट होगा. But post COVID, thankfully, because of being stuck in their own houses, they realized the value of nature, and there were a lot of changes in the way people perceived sustainability or even like sustainable tourism. और हमें ये problems फिर नहीं face करने पड़े. थैंक यू. अच्छा प्रेरणा, एक और बात मुझे आपसे पूछनी थी. इसके prospects क्या है? What prospects you see of ecotourism, not just in India or around the globe? Like, how do you see it? So if we talk internationally, the Western world has already shifted to sustainable tourism. अगर आप किसी भी इनबाउंड टूरिस्ट से या यूरोपियन टूरिस्ट से पूछेंगे कि आपको कैसा होटल बुक करना है, so they for them the first choice is a sustainable hotel if they are able to find it. In India, still we are struggling with it, but the number of people or the consciousness among the people who are getting aware and who are shifting to sustainable choices is gradually increasing. And similarly, the demand for eco hotels is increasing, and as this word sustainability is becoming more fashionable and it is buzzword for now, so even following that trend, a lot of people are shifting towards sustainable hotels. And another thing is that as they are lesser forest, because of cutting of forests and mountains, उनकी डिमांड बढ़ रही है. So उनका एक तरफ से कम हो रहा है forest, तो at the same time people want to stay in places which are close to nature. Thank you so much, Prerna. And with this, I would like to thank you, Morris, Pankaj, and you for awesome panel discussion, awesome insights that you gave into the audience and to all of us, and very relevant answers, I guess we all have got. So I'm sure our audience must have learned a lot through your insights and found a new perspective about the current condition of climate change and environment ecotourism. So Rishika, all yours now. Thank you for organizing the amazing panel discussion, Anupam ma'am and Arav. Now it's time for the final Q&A session. Let's hear your questions, thoughts, and ideas. So anybody who wants to ask a question could raise their hand and we'll allow them to talk. Anything regarding speakers' journey, their perspective.
something, another question for Prerna. Prerna, is this something, how is EcoFlow different from Airbnb? So Airbnb is about homestays. They focus on people who have, suppose they are living in a flat of 3 rooms and one room is vacant, so that one room is put on Airbnb. And for us, we are focusing on sustainability. So our hotels are homestays, they are resorts, they are hotels, they're everything, but they should be made of local architecture and they should have a minimum of 30% tree coverage inside their campus. So these are the two things What have you which thought make about us the reach? different from Okay. reach in the sense. No, I reach in the sense means expenses, right? So when we talk about sustainability, it should be reachable to the masses, right? Right? If we talk about for expensive, so not to the reach of the, masses. Yeah. So How? the average ticket price for our hotels are between 5 to 6,000 for 2 people, which includes the accommodation, stay, and the activities. And we have a lot of activities around the campus. And if you talk about any average comfortable holiday which people take, that is the expenditure they also spend upon. So we have, I will say, not budget hotels, but reasonable, like hotels at a reasonable cost, and providing you comfort, safety, and a good environment. Thank Yeah, you. it's Thank great. you. I think sustainability is journey, like this is the right, you rightly said. Yeah, it's great to know about it, Prerna. And I would like to ask another question to Mr. Nyombi Morris. So, Nyombi, I have seen your posts on the climate clock and you holding a climate clock and the climate budget that the Western countries are allocated towards climate change. So I was wanting to know if you could tell us what happened with that budget and about even about the climate clock, which I see you are posting about frequently, so that even our audience could be aware about what is happening about climate change and how the world is actually responding to it, and how it is different from it is actually doing about climate change. Yeah. Okay, thank you. I'll just be brief about that. A climate clock is just it is a clock that was set up in 2015 after when the leaders started change. So this clock started counting since then, and it has been counting the amount of pages and the time we have, like the time we have left with. Every conference, if you go and check, there are leaders who come with different pages, targets. So this clock was put there not to scare them, but to remind them whenever they go off track. Like when you look at the time they have been promising us climate finance, every time they promise, they update the clock. And that clock shows you how much you have promised us, how much losses we have got, and when are we supposed to deliver. So the time we always say is now. But remember, sometimes we need to push more to make sure that what we say is now is actually happening now. So for example, we look at climate finance in 2009, even before the climate clock, in 2009, leaders came together and talked about the issues that were affecting the communities that were linked to climate change. So they said, what we are going to do is to put down money that is going to help this community build back better, set up resilience, and also try to adapt to this crisis by setting up at least infrastructures that are capable for this crisis in case it happens. But hey, that money was 100 billion. During that time, according to what they saw,
But today, this crisis has exposed us to an extent that everything is broken. Everything is broken. From the temperature that are rising, breaking records every time, to floods, as you saw last year in Pakistan, over 33 million people were displaced. So it goes beyond them giving us climate finance, but we also need loss and damage finance. That's why when you check the clock, you find that it is not only climate finance, but there are so many finances that are there. So when we push them and we told them, guys, you talked about climate finance and you never raised them. In 2009, that's when that pledge was put up during President Obama's regime. And now we are here in 2023, the money is not coming. And what surprised me and so many other activists is that this money, the little that is coming, for example, they promised 100 billion, but according to the to Oxfam report, it indicated that out of the 100, at least each year, they are releasing 20 million to go to the least developed countries to invest in climate finance. When you talk about climate finance, meaning setting up infrastructure, investing in renewable energy like solar, investing in those solutions that are actually way far away from fossil. And my dear, what surprised everyone was this money is coming, but in form of loans. Imagine someone like me, if I have a solution to the plastic pollution, and instead of them investing in my project, they want me to go and borrow that money. Remember, they first promised, but now they want me to borrow that money because when that money comes, it comes with interest rates. So instead of us preparing for the worst crisis, we are just giving them profits. Like they are making money out of us. So these are the injustices that we wanted to highlight on Climate Emergency Day. That was July 22nd. And that's when I was in the New York and I spoke at Union Square on that stuff, like on climate crisis. So I hope you have got the clear view of the climate clock. The mission is to remind us whatever they say is being added on the clock. And whenever there is an event, we come with that clock and show the world, this is what they said last time, and this is what we have. These are the losses so far, and this is what they are saying. So we are using it to remind leaders of how far we have gone and what time is left. Remember, every time they set up pledges, they said by 2030. If you look at the clock, you will see that it is left with only 6 years. Why 6 years when we are in 2023? Because 2020 was cancelled. When you go back during 2020 lockdown, people were not moving. Emissions were very low. Pollution was down, so nothing happened during that time in 2020. That's why that year was cancelled. So we are not counting 7, we are counting 6 years to go. And now we are asking our leaders, how far have we gone? When you look at the solar panel or like renewable, how far have you implemented? Where is the money? That is the question we ask. Okay, let's talk about, okay, the little things you have achieved. Are they really enough? Because since 2015, when you sat, there is a lot you said, and nothing came to pass. When you go back in 2009, when you promised climate finance, after realizing that climate change was a man-made issue and it can be solved by man, and nothing happened. You kept on promising. Up to date, the struggle is real. So climate change is bigger than actual money, but also actions, because people have money, but they're not ready to invest in actions. That's where my worry is. And that's where my scare comes in when I see that the future is actually scary. When you look at what is happening all over, I was following the news that is happening, what is happening in Maui, Hawaii, in the US, like wildfire are taking over almost the entire region. Like the area has few trees, but even the houses are burning. This is scary, and it is not ending now unless we do something. And for young people,
I'm just so passionate and so happy that I see these people coming up with new solutions. I see them doing everything they can. This is the only thing that keeps me in a movement. Otherwise, if I wasn't seeing progress, I wouldn't be in a movement, because leaders, they keep lying, they keep promising, no deliveries. Thank you. Thanks a lot, Nyombi, for explaining to the audience what climate clock really meant, and what and where we are currently on taking actions, and how we are not really matching up our actions to our words. And that's why we need to really hold our leaders accountable for their actions, and also ask them, where did all the money go, which was meant to be spent for the climate crisis. Now, from the accountability to the government, I'm reminded of acceptance of individuals for knowing that there is a problem existing in the environment. So, Mr. Pankaj, मुझे भी आपसे यही क्वेश्चन करना था एक कि हम जैसे काफ़ी एजुकेटेड एरियाज में रहते हैं, दिल्ली आपने बताया, मुंबई, दिल्ली, पर वहीं पर बहुत सारा पोल्यूशन है, वहीं पर बहुत सारी इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं। तो फिर आपको क्या लगता है कि क्योंकि लोग भी क्या करते हैं, अगर उनको गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबल रखना हो तो उनकी प्रायोरिटी इन्वायरमेंट नहीं होती। लोग सोचते हैं कि हमें इन्वायरमेंट से क्या लेना देना, हमें इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो फिर आपका क्या मैसेज होगा उनका माइंडसेट चेंज करने के लिए, और उनको क्लाइमेट के लिए एटलीस्ट खुद एक्शन लेने के लिए, और गवर्नमेंट को भी इनकरेज करने के लिए एक्शन लेने के लिए? आरव, अगर मैं आपके क्वेश्चन को समझ पाया हूँ तो आप ये पूछ रहे हैं कि मतलब जैसे लोग हैं वो उसके लिए अवेयर नहीं है इन्वायरमेंट की जो प्रॉब्लम है, तो अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की कैसे आएगी, ये पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, क्योंकि काफी लोग होते हैं जिनके लिए क्लाइमेट या एनवायरनमेंट प्रायोरिटी नहीं होती, कुछ भी मतलब जो एक्शन लेनी चाहिए उसके लिए। तो हम उनको ये अवेयरनेस कैसे ला सकते हैं, और उनको उन तक मैसेज कैसे पहुंचा सकते हैं कि एनवायरनमेंट भी जरूरी है, उस पर हमें भी काम करना है? देखिए, एक तो है कि अगर हम लोगों को बताना चाहते हैं कि समस्याएं हैं, इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम है, तो एक है कि सिंपल सी है कि हमें जो है ना ग्राउंड रियलिटी लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी। देखिए, एक सिंपल सी बात है, अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा अगर कहीं कहता है या इस तरीके की बातें करते, तो उनको आप सिंपल सा सवाल पूछिए कि आप एक बात बताइए, आज से 10 साल पहले आपके एरिया में कितने फुट पे पानी आता था और आज कितने पे आ रहा है? अगर ये डिफरेंसेस है 100 मीटर का या 150 मीटर का, तो क्यों है ये डिफरेंसेस? तो एक तो है कि हम लोगों को रियलिटी से अवगत कराएं कि प्रॉब्लम क्या है, कि अगर हम किसी से कहते हैं वाटर लेवल क्या था आज से 10 साल पहले दिल्ली का और आज क्या है, तो वो लोग जो वहां पे रह रहे हैं ना, वो कहेंगे हाँ प्रॉब्लम तो है, वाटर लेवल कम हो रही है। सो यहाँ पे हमने उसके दिमाग में हम घुस चुके हैं यहाँ पे, कि उनको हमने बता दिया प्रॉब्लम है। सो नेक्स्ट स्टेप कि हम और भी चीजें बताएं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। इवन आप जैसे अगर दिल्ली या महाराष्ट्र में रहते, तो यहाँ पे ज्यादा आसान है हमें लोगों को समझाना, कि जैसे अगर हम दिल्ली में समझाएं जाए बात करने के लिए, तो दिल्ली में जो है हमने लोगों से बात की, तो जहाँ पे कालंदी कुंज के एरिया है उसके थोड़े दूर जाए, तो वहां पे क्या था कि आज से कुछ साल पहले तक, मतलब कि 10 साल 8 साल पहले तक 10 फुट 12-15 फुट पे पानी आते थे, बट आज जो है 70-80 फुट पे पहुंच गई है। तो ये जो इतना ह्यूज गैप आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? आप अगर वहां पे जाते हैं, क्या कहते हैं, इस करोल बाग की साइड अगर जाते हैं आपको, तो वहां पे कहीं कहीं पे 120 200 फुट पे पानी आ रहा है दिल्ली के कुछ कुछ एरिया में। तो हम इन चीजों को, ये जो मतलब कि ग्राउंड रियलिटी है, जो कि हम देखते हैं कि हर दूसरे दिन जो है लोगों को देखते हैं कि जो है ना एक अलग पाइप लगा रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं। तो हम बता सकते हैं ये क्यों हो रहा है, हर साल आप एक अलग पाइप लगानी पड़ रही है, क्योंकि पानी का स्तर नीचे जा रहा है। और क्यों जा रहा है स्तर नीचे? कि कहीं ना कहीं हम कुछ गलत तो कर रहे हैं, हमने वाटर को बचाया नहीं, या हमने अपनी नदियों को बचाया नहीं जो वाटर रिसीव हो अंदर। तो ये छोटे 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 चीजें हैं, जैसे कि हम रियलिटी दिखा सकते हैं। आज के डेट में यमुना बहुत ज्यादा वायरल है, यमुना में फ्लड आई, तो लोग देख रहे हैं कि यमुना जो है
लाल किले के साइड से बहने लगे तेरे, यमुना ने अपना जो है पुराना वो क्लेम कर लिया। तो वही है कि अब जैसे यमुना में फिर से पोल्यूशन आती है, हम दिखाएंगे कि आपने तो 2 महीने पहले यमुना देखी थी ना, यमुना तो साफ थी, अब यमुना में फिर से झाग बन रहा है। सो जो ग्राउंड की रियलिटी अगर हम वो लोगों तक लाते हैं ना, तो हम बहुत हद तक जो है ना लोगों को बदलने में कामयाब हो सकते हैं। तो एक ही है कि हम ग्राउंड रियलिटी दिखाए लोगों को। आप आपको दिखता है कुछ गलत हो रहा है सोसाइटी में, कहीं गलत हो रहा है, तो आप अगर वहां पे कुछ नहीं बदलाव कर सकते तो बस आप शूट कर लीजिए। बहुत जगह पे होता है कि हम एक्शन ले सकते हैं ऑन द स्पॉट, पर बहुत जगह पे ऐसा होता है कि हम लोगों के लिए भी होता है कि हम नहीं ले सकते एक्शन, तो हम कोशिश करते हैं कि चुपके से ही हम वो चीजें शूट कर लें और उनको फिर जाके हम लोगों को बताएं कि ये हो रहा है, ये सिचुएशन चल रही है यहाँ। तो एक ये है कि हम जो भी एक्शन ले सकते हैं, या जहां तक है कि रियलिटी लोगों तक लाए, बदलाव जो है लोग जरूर बदलेंगे, अकाउंटेबिलिटी की ओर जाएंगे और गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगी। देखिए, एक सिंपल सी बात ये है कि हम अभी जो हम अगर मैनिफेस्टो देखें, तो हमारे मैनिफेस्टो में ये नहीं होता कि हम जंगल कितने लगाएंगे, या हम कितने नदियां बचाएंगे, तालाब बचाएंगे, या हम कितने जो है हम जो कहते हैं कि जो है ना प्लास्टिक की रिसाइकलिंग वगैरह के प्रोजेक्ट्स लगाएंगे। बट हमारा जो है मैनिफेस्टो जो होता है, हमारी जो सरकार लाती है, तो हम जो है एम्प्लॉयमेंट होता है सबसे ऊपर, हमारे उसके उसके साथ होता है कि हम मेट्रो लाएंगे, ये लाएंगे। बट ये क्यों नहीं है कि इन्वायरमेंट के इशूज को हम मैनिफेस्टो में अभी तक ऐड नहीं कर पा रहे अच्छे ढंग से, मतलब टॉप 10 में नहीं ला पा रहे, क्योंकि लोग जो है अवेयर नहीं। हम जिस दिन लोगों को अवेयर करने में कामयाब हो पाए, ज्यादा मतलब अगर ये मान लीजिए 15 से 20% लोग भी अगर देश का इन्वायरमेंट के ऊपर बात करने लगे, अगर 20% अगर हम ये रीच कर जाते हैं नंबर, तो जो है ना मैनिफेस्टो में चेंज होगी। पॉलिटिकल पार्टी प्रोमिस करेगी इनके लिए, अभी तो हम प्रॉमिस भी नहीं कर रहे हैं। आपने नहीं देखा होगा कि कोई किसी ने कहा होगा कि चलिए हम फॉरेस्ट कवर इतना बढ़ा देंगे, प्रोमिस भी नहीं है। झूठे ही वादे तो कर लीजिए आप, कम से कम दिलासा तो मिलेगा, बट हम झूठे वादे भी नहीं कर रहे हैं। बात ये है, और रियलिटी ये बताता हूँ, जब हम बात करते हैं कि जीरो एमिशन की बात करते हैं कि 2070 तक, सॉरी 2070 तक हम जो है पहुंच जाएंगे, हमारे देश की सरकार नहीं। बट रियलिटी ये है कि पन्ना टाइगर रिजर्व एक जंगल है मध्य प्रदेश में, जो है बुंदेलखंड में। वहां पे एक प्रोजेक्ट आ रहा है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट के लिए 23 लाख पेड़ कटने वाले हैं। वी हैव बीन डूइंग द प्रोटेस्ट फॉर दैट। इनका ऑल्टरनेटिव जो इवन सुप्रीम कोर्ट की एक कमिटी है, सीईसी, सेंट्रल इंपावर्ड कमिटी, उन लोगों ने जो है उनका एरिया का सर्वे किया, पूरी डिटेल्स रिपोर्ट दी, सुप्रीम कोर्ट में डाली, बोली कि ये प्रोजेक्ट जो है मतलब डिवास्टेटिंग है इन्वायरमेंट के लिए। और उनने यही नहीं बोला कि डिवास्टेटिंग, उन्होंने बोला कि इसका ऑल्टरनेटिव है, उन्होंने ऑल्टरनेटिव दिया गवर्नमेंट को। बट गवर्नमेंट जो है, सीईसी जो सुप्रीम कोर्ट की इंपावर्ड कमिटी, उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको उस प्रोजेक्ट को पास नहीं किया, तो वो जाके कैबिनेट में जाके 22 मार्च, वाटर डे 22 मार्च 2022 को वो प्रोजेक्ट जो है पास कर देते हैं कैबिनेट से, पार्लियामेंट से। तो सोचिए कि अब बहुत सारे लोग इसके बारे में अवेयर ही नहीं है। एक तो है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी करनी पड़ेगी, हो क्या रहा है आपके चारों तरफ। अभी जो नया जो फॉरेस्ट अमेंडमेंट 2023 का जो एक्ट पास हुआ, वो एक तरीके से आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि, मतलब आप सोच लीजिए, आप जंगल काटेंगे, आपको कोई 100 किलोमीटर में रोक ही नहीं रहा है। हिमाचल से हैं अनुपमा जी, उनको पता होगा 100 किलोमीटर का मतलब है कि उत्तराखंड में आप मान लीजिए कि गंगोत्री से लेकर उत्तरकाशी खत्म कर सकते हैं आप, यहाँ से वहां तक मतलब गाउंड ले लीजिए, पूरा मतलब ये पूरा एरिया खत्म हो जाएगा वो। तो ये कितना बड़ा डिवास्टेटिंग है। बट कितने सारे लोग, मतलब बहुत कम लोग जो है इनके लिए आवाज उठाए या इन चीजों के लिए बात की। फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट 2023 जो आया, अब मानिए 100 किलोमीटर जो है आप उत्तराखंड हिमाचल पूरा खत्म कर देंगे। 100 किलोमीटर एरिया में अगर ये वो करेंगे, तो अगर मान लीजिए उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा कि आप जंगल काट सकते, सिक्योरिटी के नाम पे। आज तक तो प्रॉब्लम नहीं थी, आज कैसे आगे प्रॉब्लम? ऐसे कौन सा वो आ रहे हैं हमारे ऊपर? जी आदर। थैंक यू पंकज सर। मैं आपसे फुली एग्री करता हूँ कि जब तक लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, हमारी अगर 20% पॉपुलेशन भी आवाज़ उठाने लग गई, तो सरकार को चेंज लाना ही पड़ेगा। और अभी हम उस रास्ते पर क्लियरली नहीं है। तो हमें यही यही होप का मकसद था इस इवेंट का भी, कि हम अवेयर करें लोगों को कि क्या प्रॉब्लम्स है इन्वायरमेंट की, और हम इनको कैसे टैकल कर सकते हैं और आवाज़ कैसे उठा सकते हैं।
And over to Rishika and Adi for carrying forward the event. Thank you for organizing the amazing panel discussion, Anupam ma'am and Arif. Now it's time for the oh, sorry. And right. Your enthusiasm is truly appreciated. We hope that who has ignited a sense of responsibility and determination to take action for a better environment. Conclude, we would like to invite you all to donate to the We Rise Together Foundation, supporting our initiatives and helping us make an even greater impact on environment, menstrual hygiene, and poverty. The details would be sent in the chat and are visible on your screen also. Additionally, we encourage you to volunteer and actively participate in our various initiatives. If you're not living near to an impact area, no problem. We offer you a chance to lead our initiatives in your city. Together, we can bring about a positive change. Thank you everyone for being a part of this meaningful event. Your dedication to a better environment gives us hope and strengthens our collective efforts. Remember, we rise together. Thank you to the speakers for inspiring each one of us. And thank you to all the members of We Rise Together who were involved in making the first session of Hope possible. Let's make a lasting impact and create the hope for a better environment.